ऑन रिकॉर्ड में कहता हूं, नकारात्मक सोचकर शिक्षा की राजनीति करने वाला व्यक्ति। भाटी के अंदर कॉलेज खुलना था, 8 एकड़ जमीन चाहिए थी। डीएम बोलती है डीएम बोलती है बोलो विधुड़ी से जमीन ले ले। डीएम ने कहा सर विधुड़ी अपने घर के लिए नहीं मांग रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज खुलेगा। उन्होंने मिनट्स में लिखा है, सर डीएम ने मिनट्स में लिख के चली गई कि विधुड़ी वो जमीन नहीं देने वाले हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट लैंड उनके पास थी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कितना भागना पड़ा, पहले उस लैंड को अर्बनाइज कराना पड़ा एलजी साहब को, तब वहां जमीन दी। क्या गरीब के बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए कॉलेज नहीं होना चाहिए दिल्ली के अंदर? इसने कहा 20 कॉलेज खोलूंगा और नकारात्मक सोच के कारण एक कॉलेज की भी इजाजत नहीं दी। इसलिए सर मैं बता देना चाहता हूं इनको, जिस सुप्रीम कोर्ट का रोना रो रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अभी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की तारीफ वाहवाही कर रहे थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पास 13,000 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट के तो हैं, लेकिन रैपिड रेल के लिए 450 करोड़ नहीं है कि दिल्ली में मेरठ तक, दिल्ली में गाजियाबाद तक रैपिड रेल का संचालन हो। ये किसने टिप्पणी की है सर? ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो सुप्रीम कोर्ट की यह बात भी तुम्हें याद करनी चाहिए और बतानी चाहिए, इस बौने दुर्योधन ने 13,000 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पर प्रचार प्रसार में तो लगा दिया, लेकिन 4.5 करोड़ रुपया रैपिड रेल के लिए, डीपीआर के लिए बौने दुर्योधन ने नहीं दिया सर। इसलिए सर आयुष्मान योजना रोककर 2018 में योजना दिल्ली में नकारात्मक सोच सर, पूरी देश में गरीबों की बीजू पटनायक जी अपनी योजना चला रखी है, सबने चला रखी है, लेकिन दिल्ली के अंदर गरीब का बेटा, गरीब की मां, बहन, बहू बगैर इलाज के जीवन को ना खो दे, वो दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना आज तक इस बौने दुर्योधन ने लागू नहीं की। अरे दिल्ली वासी ने तुझे मुख्यमंत्री बनाया है, अरे तेरी दुश्मनी बीजेपी से हो सकती है, लेकिन दिल्ली के 2.5 करोड़ से तेरी क्या दुश्मनी है? आयुष्मान भारत योजना क्योंकि मोदी साहब लेकर आए गरीबों के लिए, वो आज तक लागू नहीं की सर। इसलिए मैं नकारात्मक सोच की बात बता रहा हूं सर। इसलिए सर मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी बौने दुर्योधन के अंदर, थैंक यू, पानी की व्यवस्था, इसी बौने सहयोगी पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी बौने दुर्योधन ने 26 जनवरी को देश के रिपब्लिक डे पर बाहर का विदेश से डेलीगेट आता है, और यही बौना दुर्योधन 26 जनवरी को राजपथ पर धरने पर बैठ गया था सर। मुख्यमंत्री धरने पर बैठते हैं, ये संविधान की बात कर रहे हैं। ये पूछिए एक बार कल केजरीवाल से जाकर कि देश बड़ा है या बौना दुर्योधन बड़ा है, देश के संविधान के बाद जाकर ये पूछना चाहिए इन लोगों को सर। तो इसलिए 26 जनवरी को इनके लंदन में, जो मैंने पहले कहा, जो लंदन में जाकर भाषण दिया, इसलिए अध्यक्ष जी अभी अधीर दादा बोल रहे थे, इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने बहुत अच्छा किया था, मणिपुर क्यों जल रहा था? 1993 में इसी मणिपुर में 9 महीने तक दंगे हुए और 750 लोगों की हत्याएं हुई, और तुम्हारा गृह मंत्री, तुम्हारा प्रधानमंत्री झांका भी नहीं, और हमारे ऑनरेबल गृह मंत्री साहब ने 2 महीने में दंगों को रोककर यह संदेश दे दिया देश में ऐसा अब नहीं चलेगा। आपने जो मणिपुर के बारे में बोला था, क्या कश्मीर की माता बहनों का दर्द याद नहीं है? ये कौन लेकर आया था? कौन देश को चला रहा था? नेहरू जी, पंडित जी ही चला रहे थे। कश्मीर के अंदर कितने बेघर हिंदुओं को बेघर कर दिया, कितनी माता बहनों की अस्मिताएं लूटी गई, ये किसने किया? ये नेहरू जी के कारण देश बर्बाद हुआ। अधीर दादा, मणिपुर की 250-150 मौतें नहीं होनी चाहिए थी शर्म के, लेकिन 750 भी हुई, तो तुम्हारे कांग्रेस के राज में हुई, उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। श्री दयानिधि मारन जी। So thank you, Chairman, sir, for giving us an opportunity to speak on this bill. So first, I would like to thank. It was nice to see the Speaker come to the House. The Speaker has made a request to all the opposition leaders, and we have behaved ourselves. And all we asked the Speaker was that he should be neutral. Although he's elected for the BJP, the moment he sits in the chair, he becomes a neutral person. And all we wanted was the Prime Minister to be present in the House. Not this session, the previous session also, when we want to speak about the Adani issue. The Prime Minister doesn't come here. Please come to the bill. He spoke everything. When during this time, all we asked in Manipur,
when you are saying about the G20, Vasudeva Kudubaka, and the whole world is one family, and when one part of Manipur is burning, and so many people are dying, 2 women were raped and made walk nude, all you want the Prime Minister... उसके बारे में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते समय बोलिए. This is related to this. जी. All we wanted was, instead of talking outside the parliament, to come into the house, sit in his chair and answer the question. That's what we asked. We never asked anything. The speaker should have done it. The house would have been peaceful. We would have more productive conversation in this house. So the cat is out of the bag. When our honorable Home Minister said, he said, the Aam Aadmi government wants to fight. Sir, we understand. We understand it. For last 25 years, you could not rule Delhi. The frustration is burning in your stomach. And moreover now, Aam Aadmi is now ruling Punjab. How can that happen? Now you have to use your friends, your alliance, not this alliance, your income tax, your CEB, your enforcement. These are your allies. Whom you use? Sir, I'm asking, sir, what is that? What does the Supreme Court said? The Supreme Court was said in its judgment, handed over the control of services in Delhi, excluding police, public order, and land to the elected government. Sir, this is an elected government. A government elected by people. Not once, twice, it has been elected. And what do you want to do? You cannot do it. What is your formula? The formula followed by the Home Minister is simple. Wherever BJP can't win, we will send the ED. We'll send the CBI. We'll ensure all the MLAs come to it. Till then, they are culprits. Till then, they are thieves. Sir, we just saw what happened in Maharashtra. NCP, with the National Corrupt Party, that's what their members had said. In fact, the local BJP leader said, never ever we'll have an alliance with NCP. But when it suited you, you arrested the ministers who were there coming in your cabinet now, were all arrested on ED charges. They were languishing in the prison. But your washing machine, Nirma, changes all that. The moment they come to you, they become pure. What formula is that? That is not the people's verdict. That is forced verdict. You're forcing a verdict. Hence, wherever you can't, what you did? What you did in Madhya Pradesh? You ensured the Congress MLAs were bought. This is what you're doing throughout. What you did in the previous Karnataka? You bought the MLAs. I don't know where that money is coming from. You call yourself not to be corrupt, but where do you get this? So all I'm asking is this. Sir, truth hurts. Truth hurts. When I talk the truth, it hurts. Sir, I'm asking, sir. Sir, He has to talk on the bill. Arise to speak. Present myself. DMK stands against the proposed government national territory of Delhi. Sir, what did you go to the Supreme Court? Sir, Point of order 369. एक सेकंड हाँ क्या बताइए 369 point of order. A paper or document to be laid on the table shall be duly authenticated by the member presenting it. ये जो बोल रहे हैं कि कर्नाटक में हमने खरीद लिया, मध्य प्रदेश में खरीद लिया, इनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा तभी ये बोलेंगे, नहीं तो इसको एक्सपेंड करिए सर, ये गलत है. इतना बड़ा एलिगेशन जो है ये कैसे लगा सकते हैं? जी 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 ठीक है एक्सप्लेन करें बैठिए बोलिए sir, the same ऐसा government. कोई आरोप मत लगाइए जिसको आप सिद्ध न कर I'm not having सकें the mic, sir. जी. Same government, your government went to the Supreme Court on what? The Supreme Court said you cannot extend the term of the enforcement director more than thrice. They said July 31st was the last day. But you went back. You said the administrative power is so important. He's the only man who can deliver fatwa. He has to be. And you got extension from Supreme Court. That means you know the importance of administration. Administration should be in control of the elected government. Should not be a puppet. It should not be a puppet in your hands. You can't take it. The Supreme Court made it very, very clear, sir, that the services should come. So now what they have done, sir, now they brought ordinance. Sir, the very fact they brought an ordinance very immediately after the Supreme Court gave a ruling in favor. Sir, we agree with you. The Parliament is the
utmost authority in making laws. That's the reason we are called lawmakers. But when any law is made here, you should make sure that we have the right to speak and right to say, if you are bringing a wrong law, we have to say you are bringing a law. Here, your intentions are very, very clear. Your intention is to control the Delhi government. Sir, why? Why is that? When you comes to you, you want the administrative to be extended, give extension. So one of your members spoke that none of the promises made by Aam Aadmi has been delivered. How can it be delivered? You always trifle the officers. You never allow the officers to function. How will the office, without the officers functioning, how can they deliver? Because you want to use this as an election platform to say, this government never did. Sir, this is not the way to do it. And again, sir, please, do not talk about alliances. It says, in Tamil say, Satan Vedam Odigirathu. It's like the Saturn, what is scriptures? Sir, you have got into unholy alliances. You take care of your family, sir, your party. We know how to take care of our alliance party, and India is very strong, sir. Next, 2024, you might be here, and we will be there. We will be there, sir. And we, sir, whatever you're using, whatever you're abusing, will not abuse. We'll make sure the CBI and enforcement, income tax, behave properly and do their jobs properly. Unlike you, whatever you are doing, they'll do it rightly. And that time we'll see who has the last laugh, sir. Sir, the question comes here, sir. In this law, which they are bringing, sir, they have ensured that there will be no longer Section 3A. Basically, Supreme Court has got a 3A. So they have ensured the Section 3A doesn't prevail in this. Sir, and next thing is this, I also would like to know, sir. Sir, in the statements of law, why they are bringing it, the Honorable Home Minister has made said, the proposed act mandates creation of 3-member committee, sir, and is also saying that, sir, basically it wants to say that it is bringing because Delhi is very, very important part of the country. Delhi is the heart of the country. Delhi, every foreign countries have their embassies here. Security is very important. We have to ensure that make sure that local government doesn't come and disturb it. Sir, anyway, the National Capital Region Security is with you. Who is in charge of the National Capital Region Security? The Home Ministry, not the state government. And why I don't understand. If something wrong is happening in law and order, you are responsible. Nobody else is responsible. Don't try to shy away your responsibility. If rape is happening in Delhi, it's you because your law and order is weak. If dacoity is happening in Delhi, it's because your law and order is not good. Sir, let me say they formed a committee now. The committee consists of the Chief Secretary, Principal Home Secretary, and the Chief Minister. Sir, out of 3 members, 2 members are appointed by them. Then there's a quorum is only 2. Tomorrow the Chief Minister may not be there. The Chief Minister is traveling abroad or traveling away. These 2 people will decide which officer can work where. Even then, sir, after all this, even the 3 of them sit together and by some miracle, they come to a conclusion. That decision can be overruled by the lieutenant governor. What is the point? What is the point? You're saying that you're giving powers, but you're not giving powers. You're showing the lollipop, making sure the kid stops crying and taking back the lollipop. So that is what you're doing. Sir, throughout, I'm going to say, the last 9 years, you are making monsters, devils out of the governors and lieutenant governors. Sir, we know that in opposition... No. ठीक है, ये ऐसे शब्द... No. These words will not go. वो बिल पर बात करना है सर, ऐसे नहीं चलेगा। No. पहले तो जब हम चाहता है ऑर्डर है। जब चर्चा ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। इलॉजिकल बोलते हैं। That's No, not please. parliament word, sir. Word से निकलेगा ये? Parliament Please. word, sir. And now conclude. सर ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। बालू साहब प्लीज आप बैठिए। ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर। आप बहुत जानकार। ओके आई हैव टेकन नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। I have taken notice of that. माफी मंगवाइए। I have taken notice of that. No, please continue. पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लो। You made No, I have taken. monsters. You ये made 352 5 पे Already नहीं taken बोल note of सकते that. सर। Please. ये कितनी घटिया बातें बोले। ओके आप बैठिए, आप बैठ जाइए जी। No, ऐसी बातें नहीं कहना Okay, चाहिए। sir. Look, And okay. the constitutional heads Yes, which are yes. being appointed by the Union Home Ministry are becoming more dangerous for the development of every state. This is not only for West Bengal, not for Now, please Kerala, conclude. for Tamil Nadu. Sir, I can tell you, sir, in my own state, sir,
the governor, because when, as long as Okay, okay. Now please conclude. Sir, I'm the only speaker. You can't. You say man says. Sir, I never say, sir. All I'm Okay, saying, okay. sir. Sir, don't control me, sir. Sir, you have to be neutral. But okay, okay. Again. Oh, okay, ये chairman, sir, chairman, sir, ये chair बातचीत कर रहे हैं, sir, he should withdraw his word. it is time prescribed for you. Yeah, please. Sir, Purpose irritating. no, you can't do like this. No. In our governor, sir. Sir, chairman का, should not know. chairman के बारे में, sir, he is accusing the Please chair, mind sir. your words. Please mind your सर words. चेयर को अक्यूज कर रहे हैं सर इसको क्षमा प्रार्थना करना है Sir, they've been. he should apologize sir Sir, right from day one, TMK has been against the appointment of governors. We have been very clearly saying that no state governments need a governor. Sir, right from our founder, Sir Anna Dore, in this house has said that in this house has been recorded that as much as a goat doesn't need a beard, so does the state doesn't need a governor. Sir, it has been. Sir, more than, sir, I would like to say 13 bills are sitting idle in the governor's chambers. What reasons? No one knows. Sir, but whereas the governor has the luxury of, sir, I've complained. Nothing wrong. When I can say Prime Minister, when I can see Home Minister, I can say it. कल्याण बनर्जी कल्याण बनर्जी नो आप प्लीज बैठिए प्लीज आप बैठिए नो conclude our speech now. Your time is already over. Your time is already over. Mr. Dhanati Maran, your time is over. threatening sir The prescribed sir time is ये already threatening taken. करते हैं अगर आना है तो अभी भी Prescribed time मैं is निकाल already दो taken by him. No, I have to Mr. conclude. Balu, Let me conclude. please cooperate with the chair. The time prescribed conclude. already been taken by Honorable Speaker. No, please. Now please conclude Let immediately. me conclude. Yeah. I can't say Prime Minister, I can't say President, I can't say Home Minister, I can't say Governor. Please, Let me conclude. you know what to Governor speak, but not to supports speak. constitutional You powers. already know that. Sir, while keeping more than 13 bills pending, sir, sir this is he should speak on the bill sir pending for his daughter Okay. in Raj Bhavan. Mr. Kalyan Banerjee now, please. I've not concluded. Okay. Sir, it's sad. Mr. Kalyan Banerjee, the time is over already. No. Mr. Banerjee, this way house can't be run. No, please sit down. No. Mr. Kalyan Banerjee, no. Please sit down. I have asked so many times to conclude the speech. No more. Please, Banerjee, Mr. Banerjee. sir No. हो गया. It has been done. Please. Nothing will go on record now. Only Mr. Kalyan Banerjee. Please. Sir, on behalf of my party, I am strongly opposing the present bill, the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Now allow me to speak, boy. Please. Sir, it is apparent from the speech of the Honorable Home Minister that it is a targeted legislation, and this targeted legislation has been made for whittle down the power of the present government elected by the people at Delhi. Sir, it is a malicious legislation now. It's a very clear from the speech of the Honorable Home Minister. Sir, our constitution does not permit any targeted legislation or any malicious legislation. This is bad. This cannot be done for whittling down the power. Sir, this amendment to the Constitution, 69th Amendment of the Constitution, where it has been brought, the chapter, in the statement of object and reasons, an important sentence I will quote, the committee went into the matter in great detail and considered the issue after holding discussion with the variable individuals, associations, political parties and other experts, and taking into account the arrangements in the national capitals of other countries with a federal setup,
and also the debate in the Constituent Assembly, as also the report by the earlier committees and commission, unquote. This is the object, one of the objects. Sir, the 69th Amendment of the Constitution has an important consequence for the special status of a Delhi as a national capital territory. Sir, it is emerges from the all speeches of the Dr. Ambedkar that Constitutional Assembly that India adopted a federal model in which the union and the states were meant to operate within their assigned legislative dormancy. These states are not subservient to the union. Sir, the majority of the 2018 Constitutional Bench judgment held that while NCDT could not be accorded the status of a state, the concept of federalism would still be applicable to NCTD. Therefore, the concept of federalism, structure of federalism, as applicable to all the states, similarly, this is also applicable to the Delhi is concerned. That's a constitutional judgment itself. Sir, let me tell you the most crucial things of the bill which is really violating. Apart from the power, etc., everybody has raised, I am not going to repeat it. Impinging provisions of this bill is this legislation. Where the power is being taken, total control is being taken by the central government. As we know, all ISS officers are appointed by the central government. Now under this bill, Chief Secretary will be appointed by the central government. Man of central government. Then the 45E speaks about the authority which is called National Capital Civil Service Authority. Who will be the member? Chief Minister will be the member. Chief Secretary will be the member. Home Secretary will be the member. And decision will be taken on the basis of the majority's decision. Therefore, who is indirectly really having the control? The central government is having the control. Does it not destroy the concept of the federalism itself? Wishes of the people of the Delhi. The Honorable Home Minister has said about 2015. Sir, I agree. All right. If 2015 they have committed wrong, they have committed illegal things, why the second time this same party has been elected by the people of the Delhi? In a democracy, sir, the people is the final person. People's mandate has to be accepted. Whether central government make any allegation or anyone make any allegation against anybody. But if the people says, no, he is correct, he should govern, central government should hear the voice of the wish and the people is concerned. That has not been taken care of. Therefore, you are taking away absolute power. You need all powers. Central government will decide. Everything will be decided by them. Sir, who is sitting? Chief Minister, Cabinet Secretary, and the Secretary. Correct? What is the fundamental to the democracy? Sir, the fundamental to the democracy there are triple chain. The triple chain, first chain is civil service officers are accountable to ministers. Second chain, ministers are accountable to parliament and the legislatures. Third chain, parliament legislature is accountable to electorate. This is a chain. This is a parliamentary democracy. Sir, how can you say the equal status, a minister who is subject to answerable under the our parliamentary system, how can he be co-equated with the chief minister or any other ministers? In a statute? In a statute, how it can be? It destroys the fundamental democracy itself. Sir, in the judgment of the government of NCT of Delhi versus Union of India delivered by the Supreme Court of India in civil appeal numbers 2357 of 2007 on 11 May 2023, which has been referred to the Honorable Home Minister. The Honorable Minister has referred 2 or 3 paragraphs. I will request him to read also the paragraph 117 of the judgment.
which is laid down the law, quote, an unaccountable and non-responsive civil service may pose a serious problem of governance in a democracy. It creates a possibility that the permanent executive consisting of unelected civil service officers who play a decisive role in the implementation of the government policy may act in ways that disregard the will of the electorate. Which is one the important? Sir, it is not the important whether central government is having the power. It is not the important whether state government is the important of the power. Important thing is this, will of the electorate. Will of the electorate has elected the government, state government. Will of the electorate has defeated the ruling party in the central government at Delhi. That has to be accepted. Will of the government will be, electorate will be implemented by all the civil servants. Therefore, you are destroying it. In a democratic form of government, the real power of administration must decide in the elected arm of the state, and elected government needs to have control over its administration. This is not my words, sir. This is not my words. Let me very frankly say, these are the words of the 5 judges' judgment of the Supreme Court. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted within its domain, then the principle underlying the triple chain of collective responsibility would become redundant. Therefore, today by introducing this bill, you are this is amounts to redundant. It is therefore nothing. Sir, at paragraph 121, it has been said by the Supreme Court in the 11th May judgment. Article 239A, which conferred a special status of NCDT and constitutionally entrenched a representative form of government, was incorporated in the Constitution in the spirit of federalism, with the aim that the residents of the capital city must have a voice in how they are to be governed. It is the responsibility of the government of the NCTD to give expression to the will of the people of Delhi who are elected it. Pausing here. Who? State or central? Question is this. State is bound. State has to give the explanation. If anything is happened, who will give the answer? Answerable is, they are answerable to the state legislature. They are not answerable to this parliament at all. Therefore, it is destroying the power itself. It has been said, therefore, the ideal conclusion would be that GNCTD ought to have control over services, subject to exclusion of subjects which are not out of the legislative domain. That has been said, land, police. If services are excluded from its legislative and executive domain, the ministers and the executives who are charged with the formulating policies in the territory of NCDT would be excluded from controlling the civil service officers who implement such executive decisions. This bill itself destroyed the concept of federalism in NCDT. Sir, it is clear, I have quoted Dr. Ambedkar. State is not in a inferior status than the central government. No. Periphery may be different. But no, they are not subsumed to the central government. Therefore, this federal character, the bill itself is destroying. Sir, it is not that. Today AAP is here, BJP is central, Congress is there or not, it is not that. 5 years, 7 years, 10 years are not very important for the country itself. Years after years, decades after decades. What we'll do here, after 25 years, our next generation will ask the question, what our previous generation has done it. Will you want to destroy the federal character of this country? That's the important question today has been posed. In different places, sir, in different states, please give me, I have time. Sir, I will take a 4 or 5 minutes time. Sir, why? All will be, why in a non-BJP state the governors are so much active?
Why they are not active in the BJP running state? Why the governor will be acting in contravention of the Article 162 and 163 of the Constitution? Sir, I tell you, these provisions under Article 331, that's the protection of the governors and the presidency, which have been given in the Constitution itself. Sir, if the maker of our Constitution thought it, never thought that one regime will come, in that regime, the governors appointed by the central government, where the ruling party of the central government will be there, they would violate the Constitution. They would not have given the protection, this governor and the itself, that no case can be initiated against them. They are taking the advantage of that. They are absolutely taking the advantage of that, since no case can be initiated against them. Everywhere, every place is in non-BJP state. In a non-BJP state, the ruling government, this government is sending National Women's Commission. They are sending Human Rights Commission. Sir, why? The chairperson of the National Women's Commission, why? The chairperson of the Schedule Caste Schedule Tribe Commission, why? The chairman of the Human Rights Commission did not get any time for last four months going to the Manipur itself? Sir, what the chairperson was doing when the offenses came up offense of crimes have been सर offense. सभी जाके आए सर ये कल्याण बाबू कल्याण बाबू जाके आए हैं कल्याण बाबू जाके आए थोड़ा इंफॉर्मेशन लेके बात Sir, I tell you, sir, रिक्वेस्ट है since आपको they are saying, I tell you, let me tell you, sir, in this house itself. Let me tell you, sir, in this, I will conclude it. I will conclude it. Sir, I will conclude it. I have said, in a non-BJP state, governors are acting beyond the Constitution. Sir. No, please. cannot discuss Okay, all right. do sir My dear, 352 sir Joshi ji, sir the member while speaking shall not reflect upon the conduct of the persons in the high authority unless the discussion is based on the Kalyana, you substance know all this. drawn in proper terms. Governor is a high officer. He All cannot right, I am discuss not the behavior of okay, conduct Mr. of the Joshi. governor here, sir. Please. That should be expunged, sir. Please, And he should be please, not. please, He should be asked not to speak about the conduct of the governor. Please. Sir, I am not, all right. Okay. I am not, Now please conclude. I am not using the word. Ji. I am using the expression. Why? A person appointed under Article 53 of the Constitution of India can act in complete breach of the Constitution. Yes. In complete breach of the Constitution. How? How the Women Commission, why they have not gone? Sir, I tell you one thing. They kindly allow me to use this expression today now. I have said in non-BJP state or non-BJP state, but I must say with honesty, let me candid before you. Now, please. That is, one governor I have seen, that's the governor of the Manipur. I tell you, yes. Again, No. again, why are you quoting? Why are you quoting any governor? We urge you to not to allow such thing. He Don't cannot talk keep no, on no. going the Kalyana, conduct of the governor, जानते हैं। whether this conclude government, कीजिए this state or आप that आप बैठिए। state. The rule is very I clear, am sir. not Rule criticizing his 352 conduct. is आप very, तो very governor clear. बैठिए। He cannot criticizing discuss, our sir. conduct. Sir, Kindly hear me. sir, I am not not criticizing. to allow like this, sir. Now conclude. I am praising her conduct. Then we will I have am to speak praising about what her has happened in the conduct. West Listen Bengal to me, during sir. the I am during the praising present her government. conduct. I am of board में नहीं रहेगा। I am not Panchayat नहीं Chunao, रहेगा। whatever happened, we will discuss it, I am sir. not. Whatever Hey, he is speaking. Mr. Sarkar, sit down. Your ministry is going No, to no, be you dropped. cannot- Sit down. you cannot ask anybody Your to sit ministry down. is going to be dropped. Sit down. Please, Kalyana. Okay. All right. Okay. Let me place it. Then I must say, one person appointed by the central government under Article 153 of the Constitution of India No, okay. is really acting at Manipur. She has Shri- said to us, our team Again went you are there. doing the same She thing. has said No, to no. us
No, very clearly. nothing will go on BJP record. government chief minister is not. Nothing Sir, will go then on we will record. discuss on the Shri West P. Bengal, Mithun sir. Reddy. वेस्ट बंगाल में इन लोगों ने महिला के ऊपर जो बैठिए, अत्याचार किया है बैठ जाइए। उसका भी हम चर्चा इसी Nothing will go on record. बिल में हम करना चाहते हैं सर। बैठिए देखिए प्लीज Sometimes बैठिए मिस्टर रेड्डी प्लीज you must have patience. Okay, okay. Sometimes you must have the degree of tolerance. Thank you, जी। sir. This is the reason whole India जी, is जी। burning. ओके Non-tolerant, थैंक यू जी arrogant attitude. मिस्टर रेड्डी यू स्टार्ट प्लीज यू प्लीज स्टार्ट आप बोलिए Can't take any उनका steps कोई in रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड आप प्लीज ओनली ओनली मिथुन रेड्डी विल बी प्लीज सिट डाउन how you will be dealt with you. बैठ जाइए आप भी कृपा करके बैठ जाइए आप भी बैठ जाइए माननीय मंत्री जी प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन प्लीज सिट डाउन प्लीज कल्याण दा आप बोलिए मिथुन दा बोलिए Too much of disturbance. मिथुन जी आप बोलिए Thank you, sir. एक मैं निवेदन करना चाहता हूं एक सेकंड देखिए चर्चा का समय बीएसी द्वारा निर्धारित होता है 3 घंटे इस चर्चा का समय निर्धारित है उसी के अनुसार आप इस बात को जानते हैं समय का विभाजन होता है समय का अलॉटमेंट होता है 1-2 मिनट ऊपर नीचे होता है तो चेयर भी इस बात की चिंता करती है लेकिन आप यदि बहुत अधिक उसका अतिक्रमण करेंगे समय सीमा का तो ये उसको फिर व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाएगा प्लीज प्लीज मैं आपको नहीं कह रहा हूं मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं तो कृपा करके जो समय आपको अलॉटेड है कभी भी घंटी उससे पहले नहीं बजेगी परंतु घंटी यदि बजती है तो विद इन अ मिनट और सो यू शुड कंक्लूड स्पीच नाउ प्लीज मिथुन रेड्डी आप बैठिए तो सही नाउ प्लीज प्लीज मिथुन रेड्डी ओके आप बैठिए गवर्नर के विषय में कुछ कहने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं उन पर कहने की आवश्यकता नहीं है प्लीज Sir, thank you Okay. for letting me talk on this bill, जी the national capital of Delhi, 2023. Sir, I would like to be very brief on this bill because it's not related to our state and this is a unique bill. Unique being that both the central and the Delhi governments are stakeholders in this. Sir, the central government, as we all know, operates from Delhi and Delhi is a union territory with a elected assembly. The foundation of the discussion lies in Article 239A of the Constitution, which grants Delhi a special status as a union territory with legislative assembly and council of ministers headed by a chief minister. The legislative assembly possesses the authority to make laws within the state and concurrent lists, except for those explicitly excluded by the Constitution. However, this bill, the basic ordinance aims to restore certain powers to the Lieutenant Governor, and the ordinance also appears to be within the scope of review of the Supreme Court's judgment, sir. If you see, the court recognized the Delhi government's legislative and executive powers over services. It did not explicitly prevent Parliament from legislating on the same subject. In fact, Article 239A of the Constitution grants Parliament the authority to pass laws related to services, even though they fall under the exclusive competence of the states, sir. Sir, I would like to be very brief. As I already told, I request the government to take all the stakeholders into consideration. And with these words, I also have a request, sir. This is a unique bill and hope this bill is not replicated for the other states. And with these words, we support the bill, sir. YSR Congress Party supports this bill, sir. Thank you. राहुल शिवाले जी ओके I ask them to mind their own business, sir. Thank you. प्लीज धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 239AA दिल्ली विधानसभा को छोड़कर राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जैसे कि पुलिस,
सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि, संसद दिल्ली के संबंध में राज्य सूची के तहत विषयों पर भी कानून बना सकती है और ये कानून राज्य कानूनों के प्रतिकूल होने की स्थिति में मान्य होंगे। अध्यक्ष जी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 केंद्र सरकार को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। अध्यक्ष महोदय, संविधान में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रतिकूल स्थिति में दिल्ली में प्रशासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून बना सकती है। अध्यक्ष, दिल्ली में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अध्यादेश लाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली सरकार द्वारा तुरंत अधिकारियों के तबादले किए गए और आधी रात को कार्यालय खोले गए और भ्रष्टाचार से संबंधित फाइलें को नष्ट किया गया। अगर दिल्ली सरकार इतनी साफ सुथरी होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद तबादले नहीं करती और न ही आधी रात को कार्यालय खोलती। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने वाली बात है कि ऐसी स्थिति क्यों आई। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामलों में बाढ़ से आ गई है, जैसे कि सीसीटीवी घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बिजली घोटाला, परिवहन घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता इत्यादि। वही दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बना रही थी और मनमाने के तरीके से उनका ट्रांसफर कर रही थी, जिससे अधिकारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली न केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि यह देश की राजधानी है, इसलिए दिल्ली सरकार की इन कृत्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष जी, यह किसी से छिपा नहीं कि दिल्ली सरकार के एक उप मुख्यमंत्री जेल में है और एक मंत्री हाल ही जेल से जमानत पर बाहर आए। जो लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दा बनाकर दिल्ली में सत्ता में आए थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अगर सत्ता में आए तो सारे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डाल देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा करते थे कि अगर सत्ता में आए तो न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न सिक्योरिटी लेंगे, जनता के आम आदमी है, आम आदमियों की तरह रहेंगे। लेकिन सत्ता में आते ही एकदम बदल कर गाड़ी भी लिया, बंगला भी लिया और सुरक्षा भी ली, और तो पंजाब में सत्ता में आने के बाद पंजाब से सिक्योरिटी भी ली है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा शराब लाइसेंस की नीति निजी लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई थी, जिसका अर्थ है व्यापारियों से रिश्वत कमाना। यह बात जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, वह पहले ही बता वह बंगला भी लेता है और अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाकर उस बंगले की मुरम्मत के लिए 53 करोड़ खर्चा करते हैं। विदेशों से मार्बल मंगाया जाता है और 9-9 लाख का एक पर्दा लगाया जाता है। अध्यक्ष, निर्माण कार्य की प्रारंभिक लागत 15-20 करोड़ थी। हालांकि इस समय पर उसको बढ़ाया गया था। ऐसा रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल लगभग 53 करोड़ खर्चा किया जा चुका है। प्रारंभिक अनुमान से 3 गुना से अधिक है। अध्यक्ष जी, MPD 2021 का एक घोर उल्लंघन है। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं कि जो लोग पानी पी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री को उसके द्वारा किए गए घोटाले के लिए कोसते थे, वही लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के घोटाले में उसका साथ दे रहे हैं। आए दिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के साथी दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा किए भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करते थे। क्या यह केवल जनता को गुमराह करने के लिए थे? फिर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली के मुख्यमंत्री कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साठगांठ कर ली है क्या? ये लोग सत्ता के लिए देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं और कांग्रेस को तो किसी भी हालत में देश को सत्ता चाहिए। कांग्रेस को तो किसी भी हालत में देश की सत्ता चाहिए, इसलिए तो वह जिन लोगों को भ्रष्टाचार के लिए कोसते थे आज उनके साथ गठबंधन बना रहे। इसलिए दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए आप सरकार के भ्रष्टाचार को किसी हद तक रोकने को और इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अतः केंद्रीय सरकार द्वारा संविधान सम्मत यह बिल संसद में लाना पड़ा। सभी सांसदों से मेरा अनुरोध है कि इस बिल को पास करने को सहयोग करें। धन्यवाद। श्री राजीव रंजन सिंह जी। सभापति महोदय, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी इस बिल को पेश करते हुए कई संवैधानिक बातों का उल्लेख किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पारा का भी उल्लेख किया, लेकिन शायद उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इस देश में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को है
और सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने 11 मई के अपने फैसले में इसकी विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने पढ़ा, कई प्रावधान पढ़े, कई पारा पढ़े, लेकिन जो उनकी सुविधा के मुताबिक उनको सूट करता था वो पारा उन्होंने पढ़ा। पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ा उन्होंने। पूरे जजमेंट में विस्तृत तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दिल्ली के क्षेत्राधिकार के मामले में व्याख्या की है, संविधान की व्याख्या की है, कानून की व्याख्या की है। लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोक लाज से, और इस सरकार ने सारे लोक लाज को ताखे पर रख दिया और डुबो के इस दिल्ली में शासन करना चाहते हैं। आप बैकडोर से शासन करना चाहते हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बिल को पेश करते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार 2015 में ऐसी बन गई कि जो भ्रष्टाचार के मामले में जिसका काम ही नहीं है सेवा करना। अरे सेवा दिल्ली की सरकार जनता की सेवा कर रही है कि नहीं कर रही है, यह फैसला तो करने का अधिकार दिल्ली की जनता को है। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं दिल्ली में, लेकिन आप 3 सीट पर सिमट जाते हैं, 3 सीट पर सिमट जाते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि वाह भाई दिल्ली में जो सरकार है उसको सेवा का काम ही नहीं कर रही है। कौन सा काम आप व्याख्या कर रहे हैं? आपने दिल्ली के एमसीडी को सारे लोगों को मिला के एक एमसीडी किया, क्या हुआ? हसर आपका दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में भी आप हार गए, फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे। तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा, क्योंकि आपने लोकतंत्र को समाप्त करने का निर्णय किया। आप अभी बात कर रहे थे गठबंधन की, आपने विस्तृत सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हम एक पारा पढ़ना चाहते हैं, कई पारा को पढ़ा है। कल्याण बनर्जी साहब ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा, फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात है, संघीय ढांचा पर आघात है। ये जो अमेंडमेंट आपने ऑर्डिनेंस बिल लाया है यह लोकतंत्र के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने 162 पारा 162 का एक पारा, हम सिर्फ 4 लाइन आपको पढ़ के सभापति महोदय सुनाना चाहते हैं। वी रिट्रीट that in light of Article 239 AA and the 2018 Constitution bench judgment, the Lieutenant Governor is bound by the aid and advice of the Council of Ministers of NCTD in relation to matters with the legislative scope of NCTD. As we have held that NCTD has legislative power over services excluding public order, police and land under entry 41 in list 2, the Lieutenant Governor shall be bound by the decision of GNCTD on services as explained above. To clarify any reference to Lieutenant Governor over services excluding services related to public order, police and land in relevant rules shall mean Lieutenant Governor acting on behalf of GNCTD. सारा तो स्पष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आपको क्या अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी? क्यों आप इंतजार करते रहे? आपने रिव्यू पिटीशन फाइल किया था, तो रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल किए थे तो रिव्यू पिटीशन का आप इंतजार करते। रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है, लेकिन नहीं, आपने इंतजार नहीं किया। आपने 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है गर्मी की छुट्टी के लिए और 19 तारीख को आप अध्यादेश जारी कर रहे हैं। आपकी मंशा है बैकडोर से शासन करना, मनोनीत लोगों के माध्यम से चुनी हुई सरकार पर शासन चलाना। यही मंशा आपकी दिल्ली में भी है और यही मंशा देश के अन्य भाग में।
ये कौन सा शासन आप चाहते, कौन सा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं? अभी चर्चा कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, गठबंधन की चर्चा कर रहे थे, इंडिया की भी चर्चा कर रहे थे। अब इंडिया का फोबिया तो उनको समा गया है, इसलिए कि आज तक तो कभी इन्होंने एनडीए की बैठक नहीं की, आज तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन जिस दिन इंडिया की बैठक बंगलोर में हो रही थी, उसी दिन इन्होंने एनडीए का बैठक किया। अरे भाई, आपको तो उस फोबिया से आप ग्रस्त हैं, आप उस फोबिया से ग्रस्त हो गए हैं और आपकी विदाई होने वाली है, तो इसलिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। चलिए बैठिए, भाषण दे रहे हैं। बैठिए, आप बोलिए ना, आप उधर ध्यान मत दीजिए। राजीव रंजन जी, उधर ध्यान मत दीजिए। एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है, किसी अन्य की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप प्लीज एड्रेस द चेयर एंड प्लीज सभापति एंड ट्राई टू कंक्लूड आल्सो प्लीज। इसलिए सभापति महोदय, इसीलिए सभापति महोदय, प्लीज सिट डाउन। नो, बैठिए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बोलिए। इसीलिए सभापति महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। आप अपनी बात पूरी कीजिए ना। अभी गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे। एक मिनट, आप प्लीज, स्वागत, आप तो बैठिए ना, बैठिए, अभी अपनी बात पूरी कर दीजिए। अभी गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टाचार पर चर्चा की। आप ही चलाइएगा, आपको बैठिए। जी, जरिए, हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। इसलिए सवाल, आप अपनी बात पूरी कीजिए, सभापति महोदय, अभी सभापति महोदय माननीय गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, भारी भ्रष्टाचारियों का जमा हो गया है। महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं और देश देख रहा है। आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है कि कौन से भ्रष्टाचार की आप व्याख्या कर रहे हैं और कौन सा भ्रष्टाचार पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक बात पूरी कीजिए जी। इसलिए चिंता मत करिए, जनता देख रही है आपको भी। 2024 में आपका भी फैसला जनता कर देगी। और इसी के साथ अरे कैसे खत्म हुआ? आपने अभी तो कर दिया भाई। नहीं, हो गया ना पूरा, अभी नहीं कंक्लूड करने दीजिए। कीजिए, तो इसलिए पूरा कीजिए। इसलिए सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो यह बिल, अरे बैठिए, पीछे बैठ जाइए। यह बिल जो आया है, यह बिल लोकतंत्र का विरोधी है। लोकतंत्र को समाप्त, वैसे इनकी मंशा है, इस सरकार की मंशा है लोकतंत्र के सारी संस्थाओं, आपने कह दी अपनी बात, आपने सारी बात कह दी है। संस्थाओं को ध्वस्त करना इनकी मंशा है। ये कर रहे हैं, लेकिन यह लोकतंत्र विरोधी है, संघीय ढांचा के खिलाफ है। मिश्रा जी, इसलिए हमारी पार्टी और हम लोग इसका विरोध करते हैं। बैठिए। नो, प्लीज सिट डाउन जी। Thank you, Honorable Chairperson, for allowing the Biju Janata Dal to participate. बैठिए, आप बैठ जाइए। बैठ जाइए जी। कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही, कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। नथिंग, नो, मिश्रा जी, नो, परमिशन इज गिवन ओनली बाय द चेयर। नो परमिशन फ्रॉम द चेयर, प्लीज। पिनाकी मिश्रा जी, उनका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आपका कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, प्लीज जी। Thank you, Honorable Chairperson, for allowing the Biju Janata Dal to participate in this very important debate.
firstly, let me चौबे जी straight क्या away- बात है, आप जरा शांत रहिए, शांत कीजिए उनको शांत कीजिए। नहीं नहीं नो, चौबे जी, अरे चौबे जी प्लीज प्लीज बैठ जाइए, अपना बैठिए बैठिए। They're going to have a heart attack. These two are going to have a heart attack. ये कोई नो, आप सम्माननीय मंत्री हैं, आपको ये व्यवहार शोभा नहीं देता है। आप बिल्कुल चुप बैठिए, बिल्कुल नो, बिल्कुल गलत बात है ये। बैठ जाइए आप मत बोलिए कुछ भी, उनको शांत कीजिए। जी ना प्लीज, आप भी बैठिए बड़े, आप वरिष्ठ सांसद हैं सब, प्लीज। मेरा समय अध्यक्ष जी अब शुरू होता है। अब शुरू होता है, यस। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण बिल पे बिजू जनता दल की तरफ से मुझे बोलने का मौका दिया। मिस्टर चेयरपर्सन, first let me commend the House and let me commend my colleagues here who have decided to engage in a debate. And we can see straight away, once you engage in a debate on the floor of this House, how rich and enriching the debate can become and how rewarding it can become. And so therefore, this is what our party has always felt under Naveen Patnaik ji's guidance, that the idea is to deliberate, the idea is to debate, the idea is not to disrupt. I hope this healthy practice will continue for the rest of the 17th Lok Sabha. हमको सबको ये आशा है। Mr. Chairperson, some excitement has been created by the Biju Janata Dal supporting this piece of legislation, which I indicated when the legislation was placed for introduction in the House. The reason it's been done is not because we are supporting the BJP. I think Mr. Dharmendra Pradhan ji is here, Joel Oram ji is here, many of their illustrious MPs, Sarangi ji is here. They will vouchsafe for the fact that we fight a very vigorous fight with the BJP on the ground level in our state. They are our principal opposition party. They are our principal opposition party. The Congress party has been wiped out of Odisha. The Congress party is reduced to some 10% vote now in Odisha, unfortunately. When I lost in 2004, I polled 46%. Today, in that seat, the Congress party has 4% vote. So that's the tragedy of the Congress party. The fact is that we are equidistant with both the BJP and the BJD. We are equidistant. We are in. The reason we support this is because we have studied the constitutional position of the power of this parliament to enact a law. 239 AA of the Constitution gives this parliament a certain exclusive and plenary jurisdiction to enact laws in regard to Delhi. Everybody is talking about the Constitution Bench judgment. Yesterday, I heard one of the illustrious AAP spokesman, who's a member of parliament from the other party, wax eloquent in Urdu say of the upper house, wax eloquent and say, कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि हमारी वफा उनके साथ थी कब, जो हम बेवफा हो गए. क्यों वफा हो उनके साथ, ये भी मुझे समझ में नहीं आया. पर बात मुद्दे की ये है कि देखिए, in this issue nobody has covered themselves with glory. The Supreme Court, in the Supreme Court, specific prayer was made on behalf of the National Capital Territory of Delhi that the government has sought a stay of the NCT ordinance on the ground that it prevents the government of NCTD from meeting its popular mandate. Mr. Singhvi, learned senior counsel, has heightened instances where senior bureaucrats have ignored orders. The LG has terminated the contract of 437 consultants working with various departments of the government. I cannot understand for the life of me why 437 consultants have to be appointed at your and my expense to run certain departments here. I cannot for the life of me understand, and therefore let me say this straight away, that the government certainly has not, the government of Delhi certainly has not covered itself in glory in this regard. So therefore, to take a high moral position on this perhaps is a little unwarranted. But more importantly, a specific prayer was made
to the Honorable Supreme Court to stay this ordinance. That is the prayer made. The judgment of 7 pages by the Honorable the Chief Justice referring this matter to the 5 judges bench, kindly see, of July 20th, 2023, barely a fortnight back, expressly says that IA number 130505 of 2023 seeking a stay of the NCT ordinance is dismissed. The same learned spokesperson yesterday said this borders on contempt of court, this bill. I see no contempt having been filed. Why hasn't a contempt been filed in the Supreme Court? Instead, a writ petition has been filed. The reason you cannot file a contempt in the Supreme Court is because the Supreme Court itself, as I mentioned the other day, gave the government a lifeline by saying that if you bring a new law, which Parliament certainly has the power to bring, if you bring a new law, then the position will obtain as per the new law. That new law now Parliament has brought. The Supreme Court now with 5 judges will decide whether that law is good law or bad law. The fact of the matter is that 239AA 7 into brackets B and 7 into brackets A, there is confusion and a conundrum about how they can be read harmoniously. There is no question about that. There is a substantial constitutional point involved here. The Supreme Court, therefore, is seized of that constitutional point today. If the Supreme Court is seized of that point, and that is the point that Mr. Naveen Patnaik, I think, has studied this entire position and taken a call, then to say that an ordinance will not be allowed to be translated into a bill, I'm sorry, is begging the question. Because once an ordinance has been issued, it is the duty of the government to bring it to Parliament, and it is the duty of Parliament to then ratify that if the government has the numbers. Therefore, today, yes, you can take a position politically and say, I will not support it, no difficulty. But don't say Parliament doesn't have the power. Let the Supreme Court decide whether Parliament has the power or not have the power. The moral position, as I said, nobody covers themselves with glory in this regard, because nobody has covered themselves with glory. But do not say that Parliament doesn't have the power. 239AA gives Delhi a peculiar and a special position in our polity. Therefore, the entire issue, this, for instance, this law cannot be brought with regard to Orissa or with regard to Rajasthan or with regard to Bengal. It cannot be brought because the Constitution doesn't permit you. Constitution permits you to bring this law with regard to Delhi. The government has taken a position that because of certain acts of omission or commission, whatever, that they have decided that to put an end to it, that they will want certain fetters to be put on the government of Delhi. And the Supreme Court now will decide whether services can be included among the other 3 provisions which were exclusion provisions in the Constitution. So it's a pure constitutional issue. It is not a question of the BJD supporting the BJP. The BJD only supports Parliament's power to enact this piece of legislation. There is no doubt on that score. Kindly understand that. Therefore, we continue to fight the BJP as we continue to fight the Congress party in our state. And as far as the no confidence motion is concerned, when that is taken up, we will certainly give our reasons as to why we feel that the no confidence motion brought by the opposition today is perhaps not warranted again in the facts and circumstances that obtained today. We will make our position clear on that. Therefore, I, on behalf of my party and on behalf of my leader, take the advised position that Parliament has the power to enact this piece of legislation. Okay. It is under the scrutiny of the courts. Yes, we shall await the scrutiny of the courts. Perhaps this debate today ought not to be so fractious as it's made to be. Let's wait for the judgment of the court. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. श्रीमती मीनाक्षी लेखी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अपनी मुद्दे की बात कहने से पहले मुझे लगा कि दिल्ली के जो 1/4 मुख्यमंत्री हैं वो कहानियां सुनाते, तो मैं भी आज एक शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की कहानी दिल्ली की जनता को और देश की जनता को सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ इस जगह पर बैठे हुए, संसद में बैठे हुए बहुत से लोग हैं शायद अनभिज्ञ हैं इस कहानी के बहुत सारे रहस्यों से, और जिसमें ये रहस्य है कि
एक आम आदमी का नाम और वेशभूषा धारण करते करते कोई शीश महल में रहने वाला नवाबजादा कैसे बन गया। और वही कहानी इस बिल के मूल में है। और वो कहानी है कि एक व्यक्ति जो खड़ा होकर कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, 53 करोड़ का घोटाला करके शीश महल खड़ा करता है दिल्ली के उस क्षेत्र में जहां पर आप ईंट नहीं लगा सकते। 6000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6000 करोड़ से ऊपर का बजट दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट का है। उसकी मीटिंग जब 21 तारीख को रखी जाती है तो ये नवाबजादे वहां पहुंचते नहीं, कहते हैं मैं और राजनीतिक गतिविधियों में राजस्थान में उपस्थित हूं तो आप इसको बढ़ाइए। उसकी तारीख 23 की जाती है, 23 को भी ये उस वहां पर नहीं पहुंचते, फिर उसको बढ़ाकर 26 या 30 की जाती है और उसमें कहा जाता है कि मेरे जगह पर, मेरे बिहाफ पर आतिशी मरलेना इसको अटेंड करेंगी। आतिशी मरलेना जो दूसरी मंत्री हैं वो भी नहीं पहुंचती 30 तारीख को, और उस तारीख को बढ़ाकर 6 तारीख को कर दिया जाता है जब दिल्ली के अंदर कम पानी छोड़ने पर बाढ़ आ जाती है। 2 साल से दिल्ली फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई, और जब 3 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया, दिल्ली में बाढ़ आ गई, 8-8 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ा गया, तब बाढ़ नहीं आई। ये बात मैंने इसलिए शुरू की कि आज जब यहां बैठे हुए लोग जिक्र करते हैं दिल्ली का तो वो भूल जाते हैं कि दिल्ली राज्य नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा 1/4 मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले तो आधी ताकत कोर्ट ने ही मान लिया कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ऑल दीज इश्यूज विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ले दे के एक विषय बचा था जिसके ऊपर सारा झगड़ा है, सारा मामला फंसा सर्विसेज के ऊपर। और जब सर्विसेज की बात आई तो सर्विसेज क्यों आवश्यक हुई। मेरे से पूर्व में बोलने वाले मेरे अन्य दल के मित्रों ने कहा कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अब अगर हम सब मानते हैं कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने निर्णय में तय किया है कि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी का अधिकार रखती है, वो स्टेट नहीं है। और यूनियन टेरिटरी चाहे दिल्ली हो या पौंडीचेरी हो, सेंटर का उसमें अधिकार है। और जब विल ऑफ द पीपल की बात आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बड़ा तो विल ऑफ द पीपल कोई और रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रधानमंत्री से बड़ी विल तो एक शहर का मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट नहीं करता, जहां पर 7 सांसदों को चुनकर इसी दिल्ली की जनता ने भेजा है। तो जब ऐसी ऐसी मुश्किलें आती हैं दिल्ली में, मैं कोविड याद दिलाना चाहती हूं या बैठे हुए सब लोगों को, पूरे देश की रिक्वायरमेंट कोविड से पहले ऑक्सीजन की 972 मेट्रिक टन थी, पूरे देश की, जो लिक्विड ऑक्सीजन की, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए होती थी एलएमओ की। कोविड आया, भाई साहब ने एक तो अस्पताल नहीं बनाया, किसी की कोई मदद नहीं की, भोजन की व्यवस्था नहीं की, कोई काम नहीं किया। और ले देकर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल सिटी है, पूरा देश और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं की निगाह यहां लगी रहती है, तो केंद्र सरकार को कूदना ही पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई सांसद काम नहीं करेंगे? सांसद बेचारे इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाती है तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई 972 मेट्रिक टन दिल्ली के लिए बहुत अधिक है, हम इतनी सिर्फ दिल्ली को नहीं दे सकते, पूर्वोत्तर के राज्यों से जहां पर आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से ऑक्सीजन को काट करके लाना दिल्ली। और आप अंदाजा लगाइए कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। क्रायोजेनिक टैंकर्स, हवाई जहाज, ट्रेन, सब कुछ लगाकर ऑक्सीजन लेकर आए और लाकर दिल्ली के बॉर्डर पे ऑक्सीजन खड़ी कर दी। बोला जी बताइए कहां भेजनी है, तो उसकी अव्यवस्था थी, इनको पता नहीं था कहां भेजनी है। और जो प्राइवेट अस्पतालों की अपनी व्यवस्था थी ऑक्सीजन लाने की, खरीदने की, उसको तहस नहस करके इन्होंने सरकारी अस्पतालों में वहां पर भेज दिया जहां पर कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की थी। दिल्ली के अंदर जब मेडिकल चीजों की व्यवस्था की बात आती है तो एम्स केंद्र सरकार चलाती है, सफदरजंग केंद्र सरकार चलाती है, लेडी हार्डिंग, लेडी इरविन सब केंद्र सरकार चलाती है। कई लाख करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार करती है, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय करता है। जब इनको कहा गया
G20 है, सड़कें ठीक कर लो, तो कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे। 700 करोड़ रुपया रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने दिल्ली को दिया है। तो अब आप पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर केंद्र का हस्तक्षेप कैसे? दिल्ली के अंदर केंद्र के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली चल ही नहीं सकती, क्योंकि शीश महल में रहने वाले नवाबजादे ने 13,500 करोड़ रुपया सिर्फ होर्डिंग पोस्टर के ऊपर खर्च करना तय किया है। और इसलिए यह बिल लाना पड़ा, और यह बिल लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली की जनता जवाब हमसे मांगती है। आप जैसों के घर में जब पानी भर जाता है तो आप भी एनडीएमसी को फोन लगाते हैं, दिल्ली सरकार को फोन नहीं लगाते। 70,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में होता है तो उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी। इस एक्ट के, इस बिल के मूल में जो भावना है वो भावना यही है कि एक व्यक्ति, सबने जिम्मेवारियों की और तमाम चीजों की बात की, एक व्यक्ति नवाबजादा बन गया है आम आदमी कहते कहते, और वो भूल गया है कि चुने हुए नेता, चाहे कॉरपोरेटर हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली से एमएलए हो, चाहे एमपीज हो, सबकी जवाबदेही अपने लोकतंत्र में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति है। और यहां पर अपनी सब चीजों से हाथ जोड़कर कह देना कि भैया केंद्र की सरकार काम नहीं करने देना चाहती, हम तो करना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं, जैसे इससे पहले मेरे कई मित्रों ने कई सारे उदाहरण दिए हैं, मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगी, पर एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इनके पास 400 करोड़ रुपया नहीं है, तो कौन काम नहीं करने दे रहा? एक तरफ कहते हैं हमने इतने स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, केंद्र सरकार के खड़े हुए कॉलेजेस और स्कूल्स वो केंद्र सरकार ने बना के दिए। 300 500 करोड़ केंद्र सरकार ने लगाया, जाके अपनी फट्टी टांग के आ जाते हैं। तो अब ये सब अगर केंद्र सरकार करेगी तो काम करवाने का अधिकार भी उसके पास है। और इसके मूल में असली कहानी शीश महल की कहानी है। असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स की कहानी है। असली कहानी है कि बिना, आप बताइए, मुझे नहीं मालूम, सबको बहुत एक्सपीरियंस है, वैसे राज्य सरकारें चलाई हैं, और जब ये लोग मोरालिटी की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 90 बार 356 को इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना करें तो बेहतर है। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। नहीं, अरे मजाक की बात है, मजाक की बात। एक मिनट, सर, मैं जो कहना चाहती हूँ, टूल्स ऑफ गवर्नेंस कि यहां पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। आप देश की जनता को चूना लगाते रहेंगे और सीबीआई काम नहीं करेगी। आप गुंडागर्दी करते रहेंगे, दिल्ली के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है तो राइट्स करेंगे और पुलिस काम नहीं करेगी। क्या ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं? अल्टीमेटली ये सब टूल्स ऑफ गवर्नेंस हैं, और टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस अगर इस्तेमाल नहीं होते इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि ये टूल्स आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। और आज जब दिल्ली की बात आती है, जब इस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट की बात आती है, तो मैं इस इनैक्टमेंट में एक चीज याद दिलाना चाह रही हूं, क्योंकि मैंने कहानी शुरू की थी शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की। तो शीश महल में रहने वाले नवाबजादे कहा कि 370 पेज मेरे पास हैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो वो 370 पेज तो खो गए। उन 370 पेज का तो हिसाब किताब कहीं आया नहीं। और आज विडंबना देखिए, उन्हीं के हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, उन्हीं के साथ अलायंस की जा रही है, उन्हीं के साथ गठबंधन किया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार को कैसे रोकने की बजाय कैसे बढ़ावा मिलता रहे। और कानूनी व्यवस्था, और जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बीमारी होती है तो थोड़ा लाचार कर देती है, पर लाइलाज तो नहीं होती। इसी तरीके से संविधान के अंदर लाइलाज कुछ भी नहीं है। अगर बीमारी पैदा होगी तो उसका इलाज भी होगा। और खास तौर पे दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेंगू की बीमारी फैलाने का काम किया, कोरोना की बीमारी फैलाने का काम किया, काम नहीं करने का काम किया, इलाज तो होगा ना उसका भी, और ये उसी का इलाज है। आप अंदाजा लगाइए, मैं बाढ़ की बात
बार बार लेके आ रही हूं, बाढ़ की बात में 6,500 करोड़ रुपया फ्लड डिपार्टमेंट का खर्च हो जाता है। 250-260 लोग उसमें काम करते हैं, और जब बात की जाती है तो हरियाणा ने नहीं किया, उसके बीच पंजाब आता नहीं, हिमाचल ने काम नहीं किया, बाकी सब ने काम नहीं किया, ये बहुत खास है, इन्होंने काम किया। और फाइनली जब उसमें मिलिट्री को इंगेज करना पड़ता है, आर्मी को लाना पड़ता है, आर्मी के गोताखोर लगते हैं, तो लास्ट लाइन पहले होता है 20 घंटे लगातार काम करने के बाद में आज वो बराज के गेट खुले, और वो बराज के गेटों से सक्शन पंप लगा के, कंप्रेसर लगा के हमने सिल्ट को हटाया। तो भाई सिल्ट कलेक्ट कैसे हुई जब 6,500 खर्च हो गया, ये तो समझा दो। और मिलिट्री के गोताखारों को बाद में धन्यवाद। आप 20 घंटे ऐसे पढ़ के लगता है कि जैसे 20 घंटे यही गोता लगा रहे थे पानी में। तो यही कारण है कि इस एक्ट को लाना पड़ा। और सर्विसेज में जब लेके आए तो सर्विसेज में लाने के पीछे, हाँ मैं इससे पहले अपने मेरे कुछ मित्रों ने कहा है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, मिलिशियस लेजिस्लेशन है। तो जिन्होंने ये दो शब्द यूज किए हैं, टारगेटेड और मिलिशियस, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये पर्पसफुल लेजिस्लेशन है, और वो भी एक कॉन्सेप्ट होता है लेजिस्लेशन को बनाते हुए कि फॉर अचीविंग द पर्पस। एंड व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस between domestic politics or domestic needs and national needs, because Delhi is a capital city where balance needs to be kept between the local as well as national and international requirements, because we are a capital city. So it is a purposeful legislation to achieve the balance between two methods of governance. The second aspect has been that throughout there have been misstatements by lawyers, by practicing lawyers, by repeatedly saying that India is a federal structure, federal structure, federal structure. Either they have not read or they are misleading. I will go by the second, that they are misleading, misstating and misquoting. India is a quasi-federal structure, which is what Constitution demarcates. India is not federal. The center will always have a primacy, otherwise to govern a complicated state as complicated as India is, as diverse as India is, will not be possible. That's why the Parliament of India, the center government of India has been given the primacy even in the Constitution, and this Parliament has every business, every right to correct the wrong and bring the right law. The next thing, concept of states will be power and responsibility. I'm purposely addressing what the argument have come from the other side. So power and responsibility. I would say if a person by whichever method has come to power and becomes irresponsible, will the parliament, I'm so sure, will of the people, we have also seen ballots being rigged. So don't tell me whichever you don't understand. We also understand how panchayat elections have been conducted in West Bengal. So don't tell me all this. I think people of this country are mature enough. So when power vests with people who act irresponsibly, will this parliament not have the power to correct that wrong and tell people what their responsibility is, to make people answerable to the very people who have elected you? So the answer is power and responsibility. The balance needs to be struck, and that balance is what this legislation is seeking to address. Unaccountable, irresponsible. I mean, these are the words used. So I would go by that somehow the power structure in Delhi has been unaccountable and irresponsible by the manner in which the neutral bureaucracy has been dealt with. I do not know, I mean, I can only quote a great example of our own Prime Minister when he was the Chief Minister of Gujarat, and we know how all kinds of cases, fake cases, etc. were made, and how those chief secretaries used to be appointed by the central government. Did they beat them up? Did they take them to a corner?
Did they assault them? Answer is no. You don't do that. You battle it out in the court of law. You battle it out by the method which is prescribed by law. But here the chief secretary, here the bureaucracy had been put under immense pressure to do the wrong. Arvind Kumar, a person, a bureaucrat working with the office of Deputy CM, is a witness in the case of शराब घोटाला. शराब घोटाले में गवाही उसकी है कि किस तरीके से कोने में ले जाकर प्रेशर किया जाता था, गलत काम करवाए जाते थे. उसका क्या कोई इलाज नहीं निकलेगा कि आप गलत काम करवाने के लिए ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे? अभी पिनाकी जी ने पढ़ के बताया, जजमेंट में एक्साइटेड है. 400 से ऊपर लोगों को आपने बिना सर्विस कमीशन के, स्टेट सर्विस कमीशन होता है, सेंट्रल सर्विस कमीशन होता है, बिना सर्विस कमीशन के, बिना वैकेंसी निकाले, बिना कुछ किए अपने रिश्तेदारों को 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी दे दी. बाकी लोग क्या करेंगे जी? इस देश में इतने लोग बैठे हैं जिनको नौकरियां चाहिए, काम चाहिए. आप अपनी मर्जी से सरकार चलाएंगे? उसका इलाज है. और एक सवाल इन्होंने किया, 3 साल 10 साल, अरे एक्सटेंशन, क्योंकि वो आपके आदरणीय अध्यक्ष जी 370 पेज का नाम इन्होंने लिया था शीला जी के खिलाफ. जिस तरीके के घोटाले इन्होंने किए हैं वह 3-5 हजार पेज हैं. वो 3-5 हजार पेज के लिए उसको एक्सटेंशन देनी पड़ती है क्योंकि इतने मोटे घोटाले किए हैं. नाउ कमिंग टू द मीट ऑफ द मैटर, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है. Try to conclude also. Please sir, I will. So the state's reorganization, which was brought in 1956, several changes have come, and finality is 2023, where Supreme Court gives control over services to Delhi government, and then ordinance was brought, and now people are saying, why was ordinance brought? Because act could have been brought, bill could have been brought. There was a gap of about 6-7 months, 5-3 months. So my point is, within less than 24 hours, when the Sheesh Mahal Ghotala was being investigated by the Vigilance Department, that not just that officer, 70-80 officers were transferred overnight. Now these are the officers which were investigating the scam. And because they were investigating the scam, overnight they tried to circumvent the scheme of governance and transfer those officers. Thus, there was a need to bring in an ordinance. And after bringing an ordinance, the bill has been brought in. And this bill has been brought in to correct the status. So the statutorily, so why was this brought in? This bill has been brought in to statutorily balance the interest of nation with the interest of Union Territory of Delhi in administration of the capital by giving purposeful meaning to the manifestation of democratic will of the people reposed both in the central government as well as GNCTD, that is National Capital Territory region of Delhi. So by virtue of this, what has really happened is that a particular body, National Capital Civil Services Authority, has been established. And this National Capital Civil Services Authority will have 3 members. Chief Minister, who is not just the Chief Minister, but also the presiding officer of this committee, of this authority. Will have a member secretary, who's a member secretary of Home Secretary of the state of Union Territory of Delhi is going to be the member secretary. Then Chief Secretary of Delhi, because he's the principal officer dealing with administrative issues. What can it do? It can deal with transfers, postings of officials and disciplinary matters. Sole discretion on several matters, including those related to National Capital Civil Services, summoning, prorogation, dissolution of Delhi Legislative Assembly. This is all what has happened. Now, being the capital of Delhi, being the capital of India,
Delhi had been administered by the President of India directly earlier. And a sui generis status was, however, conferred on Delhi, whereby it retained the union territory nature and with a legislature. A lot has been quoted on 239A, entry 43, list 2. Now the judgment, which has been off-quoted, I'm reading that part. So judgment says, in the absence, and I'm sure people familiar with legal procedures know that any judgment records all kinds of arguments and all kinds of facts, and then it gives certain specific subject matter related statements. So where it says, in absence of any specific parliamentary legislation dealing with the subject of services as contained in entry 41 of list 2 of the 7th schedule specifically and in detail, the Honorable Supreme Court was pleased to pass a judgment on such and such date, and whereas in view of its special status as a national capital, a scheme of administration has to be formulated by parliamentary law to balance both local and national democratic interests which are at stake, which would reflect the aspirations of the people through joint and collective responsibility of both the government of India and government of National Capital Territory of Delhi. So this statutory balance the interest of nation with interest of union territory will give purposeful meaning to the manifestation of democratic will. Our constitution, the formation of Delhi as a union territory is unique in itself. It may be remembered that every union territory is administered by the president acting through an administrator, and while any UT may have an elected body, it does not diminish the supreme control of the president and the parliament over them as per the constitutional scheme. आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर इस मामले में जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं और या जो दानिक्स हैं, उनके ऊपर पोस्टिंग और इन सब चीज़ों का अधिकार जो है वो केंद्र का है, सेंट्रल सर्विसेज। और उसके अलावा जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, बाकी जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर जो बॉडी रहेगी वो ओवरसी करेगी। इनके अपॉइंटमेंट्स वैसे होंगे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगा और उनका वर्ड जो है वो सर्वोपरि होगा, ओनली इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अदरवाइज रायशुमारी से ये काम होगा, और रायशुमारी करने में कोई बुराई नहीं है जी। दैट इज व्हाट बैलेंस इज ऑल अबाउट, एंड दिस बैलेंस ऑफ पावर टू गिव जिम्मेवारी एंड टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट दिस लेजिस्लेशन इज ऑल अबाउट। अंत में मैं एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ, और वो बात है कि जिस तरीके से इन्होंने ये तमाम चीज़ें की हैं, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मिस गवर्नेंस, तो ऐसे में अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और जिनको इन्होंने चौकीदार का नाम दिया था, तो जो चौकीदार की सरकार है वो चौकीदार तो चौकीदारी पूरी करेंगे और नवाब को भी जवाब तो देना ही पड़ेगा और जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। थैंक यू। श्री रंजीत रेड्डी जी। Thank you very much, sir, for providing me this opportunity to speak on a very important and crucial bill which impacts the federal structure of this country. And I feel this is a leitmotif of the Honorable Prime Minister of this country, the democratic values of the democracy, which is considered to be the largest in the world. I, on my behalf of my party, strongly oppose the bill, lock, stock and barrel. Sir, Abhi, the fight is very open. The discussions are going on since very long. The topic of discussion is what will happen to the Delhi bureaucracy? Whom should they report to? What is their responsibility? Whose accountability is this? Ye dekhe to, my earlier speakers were talking very high about the responsibilities of the National Capital Civil Services Authority, and उन्होंने बोल रही थी हम जवाबदार है public के लिए. What has happened to the government elected by the people? No one talks about that. They talk, the Kejriwal government is not doing anything. Let us not talk on all those things. Who was elected
to be seated there. That is very important, sir. When the democracy, such a largest democracy, आज का दिन क्या हो रहा सब? जिसकी लाठी है उसकी बैंस है. That is where it is ending up. So when we talk about the responsibilities, हमारे पास एक blockbuster का movie आया था, RRR. So there were two heroic performances by two important heroes, Ram Charan and Rama Rao. This was directed by a sensational director with his creative skills by name Rajmouli. ये 3 hours जितना important है, this is related to this issue also. Because what has happened here, generally in a governance, what happens, the bureaucrats are responsible to the cabinet of ministers and the chief minister. The cabinet of ministers, this is the first hour. The second hour says that the cabinet of ministers and the honorable chief minister are accountable to the state assembly. And the final hour, the state assembly is answerable to the people. So the Oscar-winning movie, because of the dance sequence of Natu between the two heroes, that is what is going to happen in this situation, sir. So it has to be a Natu between the Chief Minister of Delhi and the Home Minister, directed by the Prime Minister. Is that what has to happen, sir? No, this is what is going to happen now, finally. The earlier speakers were speaking so much about all these things. The people are matured enough to what is happening in the country. We will be happy if the people are matured enough and see what is happening in the country, sir. So finally, the Delhi bureaucracy has to report to whom is very important. If they are to report to the LG, who is non-elected, or reported to the people-elected governance. This is what has to be decided today, sir. Because when the Honorable Home Minister was talking about the convenience of the judgment, he says, "वो तारो अच्छा पढ़ना था, अच्छा ही पढ़ते sir. सब लोग अच्छा पढ़ते. What exactly the opposition is raising? Let them answer for that also. The clause 239AA clearly says, as per the Constitution, the Legislative Assembly shall have the power to make laws whole or part of the NCT, which is inclusive of what state subject and the concurrent list also. When the services are removed, what will happen, sir? हम तो गठबंधन में part नहीं होता. Home Minister साहब बोल रहे थे. We are not part of गठबंधन. But I am telling you, the center we can understand has overriding powers. But these overriding powers have to be used how, sir? Rationally, ethically, democratically, and morally also. How ethically and morally, 100% this is against the 239AA, sir. This is not only applicable to the Delhi governance, sir. It is applicable to all the states where the opposition parties are there. What has happened to Jammu and Kashmir? The unitary, it was reduced to UT because of some other reasons. But elected government was demolished also. So we are not against the ordinances. Ordinances have to be moved. This government has moved 80, they have promulgated 80 ordinances. But no ordinance should violate the fundamental federal and democratic values of the governance, sir. If the bureaucracy has to report it a non-elected person, what should the elected government do? That is finally what is happening here. And as Lekiji was saying, that they have created an authority, National Capital Civil Services Authority. Very good. It is headed by the 3 members. We understand. As the other MPs spoke, it is a matter of the majority. When 2 of them are controlled by the center, what can the Chief Minister do there? And this authority will recommend for the postings, for the transfers, for the disciplinary matters of all the bureaucrats. When they can do that, she cannot disturb us. We are not disturbed her also. We are not disturbed her, sir. I am not yielding, sir. Sir, I am not yielding, sir. We are not disturbed her also. When the authority, no, sir. I am not yielding, sir. Why should we yield, sir? When the authority can recommend everything and when the LG can take a call on that, what is the role of the authority? What is the role of the Chief Minister there? It is the LG who decides what exactly has to happen. What is happening? The ordinance is just spoken about and the things are happening in Delhi, sir. The State Vigilance Minister was saying that. And in some other department also, what is happening? A case was fought. Thank you. Sir, 2 minutes, sir. There are so many authorities. There are 50 authorities which are controlled by the central government. What is the elected government meant for, sir? All these authorities, let it be water regulatory, transport, tourism, jail board, all these are controlled. And these secretaries have started
behaving funnily. They would want to report only to the LG, not to the concerned ministers. If this continues, what will happen, sir? Even there is a wording of Supreme Court also 2018 and 23, which is against this. They clearly says that the LG does not have any independent decision-making power. So if we can draw lines wherever we want, and if we don't want the lines to be drawn, what can the government do, sir? No, this is not the way to do. I honorably request the Home Minister to please retrieve this thing and reconsider and withdraw the bill. We on behalf of my party strongly oppose the bill, sir. Thank you. Shrimati Supriya Sule ji. Thank you, sir. I stand here to oppose the bill brought by the Honorable Home Minister. So the bill is about elected versus the selected. India's a democracy, not a dictatorship as yet. So how an elected government is being demeaned and is going to be run by the selected is my humble question to this government of India right now. The bill is completely undemocratic, unconstitutional, and it's completely against the spirit of cooperative federalism. My learned friend Meenakshi Lekhi ji has just left. She was talking about cooperative federalism and talking about control. I was surprised that in a democracy there's control. So I was slightly confused because these kind of committees are only in countries like China. I don't think India has this kind of control because I still believe it's a democracy. And while she was talking and running down cooperative federalism, I would like to remind her from the BJP, the Honorable Arun Jaitley ji, who I really miss in this house, always eloquently talked about cooperative federalism and how much they wanted to work with the states and empower states, and that's the beauty of India. And she was talking completely against what the BJP original, or maybe this is 2.0, has a different view. I think I need to know the clarification. I don't know whether it's a generation gap. But in a democracy, control is not the right word. It's a dictatorship which is the right word. The other thing which I wanted to ask her, she was talking in her speech that it's not a full state. I want to very humbly submit to the BJP and ask them, in their manifesto, every Delhi election, the BJP has always asked for a full statehood of Delhi. If I'm wrong, I stand corrected. Anybody can challenge me on this. I'm willing to take my speech back. So when you're talking about a full statehood, so were you lying in the manifesto? Are you lying to the people in Parliament? Parliament is supreme. The Honorable Prime Minister calls it the temple of democracy. So how dare you lie in a temple of democracy? Or are you lying? Then stand up and admit कि हमने जो manifesto में रोका वो झूठ था, हमको ये नहीं था और एक जुमला था और हम माफी चाहते हैं इस देश को. They have to apologize to the government because they have lied to the nation. I want a clear clarification from the Honorable M. Minister. Another small question, when they talk about full statehood, sir, in the manifesto, they are talking about full statehood for BJP. I want a clarification from the BJP. Then they are saying Jammu Kashmir, which was a full state, you have broken it into 3 states and for 4 into UTs, and they have not had an elections for 4 years. Standing right here, I have clapped for the Honorable Home Minister when he said, "Ek saal mein election lunga." We had all supported him and clapped for him. 4 साल हो गए सर, जम्मू कश्मीर में आज तक इलेक्शन है. पूरे स्टेट को आपके तोड़ के 3 यूटीज बनाए और 1 यूटी का पावर जिसको आप चाहते थे, बीजेपी चाहती थी कि फुल स्टेट हो. So what is this double-faced all the time policy making of the BJP is my clear question to them. They must answer. There are 2 more questions I want to ask technically, which my friend Pinaki Mishra, I think, is just left. I want to ask this question because the Honorable Home Minister talked about it. He said in Article 239AA7 empowers the Parliament to make a law to supplement the provision contained in article not to violate. And he, in this same reference, said that this will have to go back to the Supreme Court, which is 3 kilometers away. If it's going to get back and there is ambiguity in it, then why are we discussing this and wasting our time? So this is a clarification government share, because the Honorable Home Minister also talked about 239AA7, and so did Pinaki Mishra, who's supporting this, but still saying it will go back because there's ambiguity. So then what is the importance and relevance of Parliament? Can we get a clear clarification, because it's confusing all of us. Another point about the same thing about Article 239AA. It says in Parliament does not enjoy concurrent powers of law making at the issue services under the entry 41 list 2.
but no exercise of concurrent powers allows the parliament to withdraw the same power from the Delhi government. What does this mean, sir? What, I mean, what, it's a complete contradiction. So if what we are discussing is going to get struck down, whose ego are we pandering here? Who are we intimidating here is my question to this government. Another few questions I want to ask. They talked about Delhi Services Authority. Delhi Service Authority, I have 3 questions. This is similar to the China model, sir. In clause 45D, my question to them is the committees of 3 people. Majority wins so far in a democracy, unless it will change to a dictatorship, I'm not sure. By the way, the people in the power are intimidating us all the time. But we want to ask them, mother of democracy. My question to them is that if there are 3 people and majority wins, 2 secretaries versus 1 chief minister. So if the elected chief minister, who is elected by the people of Delhi, is vetoed by 2 secretaries, then what happened? Appointed will decide. So selected versus appointed. See, there you go. Appointed. My second question to the government is, will the chief minister be rejected? My first question. My second question is, will the 2 officers overturn the power of a chief minister? Is my question to this government. One more question. Can the LG rule what the honorable chief minister has decided? He can overrule. What is this? So then that leaves the government powerless. Then why have a government in Delhi? Is this what the final agenda is? So this is my clear 3 questions to, two small questions which I really need a clarification. Just 2 minutes, sir. See, बड़ी विनम्रता से मैं सरकार को पूछना चाहती हूँ, बड़ी विनम्रता से. They talked about morality, which is a good thing. Morality तो होनी चाहिए. और हमेशा बीजेपी हमको कहती है 2014 और 19 में डंके की चोट पे हमको जनादेश दिया था. अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ डेमोक्रेसी. आप जीते, हमारे हम मानते हैं. फिर केजरीवाल जी को 1 रूल और इनको 1 रूल, ऐसे कैसे? अगर इस देश के, इस दिल्ली ने जनादेश अगर अरविंद केजरीवाल को दिया है तो वो गलत है, लेकिन इनको जनादेश जब मिलता है वो पॉपुलैरिटी. ये कौन सा न्याय होगा? इट्स रियली अनफेयर सर. तो ये लोकतंत्र है. ये कहते हैं केजरीवाल जी को दिल्ली भी मिली और पंजाब भी मिला. हाँ मिला, बट लोकतंत्र है ये सर. सो वेदर यू लाइक इट और नॉट, टुडे whether anybody likes it or not, today Punjab and Delhi is ruled by Aam Aadmi Party and not by rigging any election. And if Meenakshi Lekhi ji said rig or election, then what was your government doing? You're saying Punjab was rigged? Was Delhi rigged? Is my question to the government. I want to ask her. ये नैतिकता की बात कर रहे थे. इनका लीड स्पीकर नैतिकता की बात कर रहा था. What was he saying? नैतिकता? I didn't disturb anybody. नैतिकता की बात हो रही थी. इन्होंने कहा कि दिल्ली की जो सेक्रेटरी है उनको पकड़ के मारा. सही है बात. Absolutely I agree with her. गलत है. 2 wrongs don't make a right. So let's unanimously say कि अगर गलती हो गई है किसी भी राज्य में, अगर दिल्ली की सरकार ने किसी चीफ सेक्रेटरी को बांधा है, वो गलत है. आई एग्री विथ यू मीनाक्षी, इट इज रॉन्ग. बट देन प्लीज टेल द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वेयर योर 105 MLAs आर देयर, वहां 3 लोगों ने, एक बीजेपी के एमएलए ने एक अधिकारी को थप्पड़ मारा, एक बीजेपी एमएलए ने उसको बांधा, और एक इनके एमपी जो इनका है उन्होंने भी एक थप्पड़ मारा अधिकारी को. सो अगर दिल्ली में भी गलत है तो महाराष्ट्र में भी गलत है. सो व्हाई कांट वी यूनानिमसली पास दिस? सर एलिगेशन कांट बी वन वे. सर गठबंधन की बात, 2 वेरी स्मॉल पॉइंट्स. उन्होंने गठबंधन की बात की. आई हैव नो प्रॉब्लम. लोकतंत्र में कोई भी गठबंधन करता है. इनको बहुत शौक है 2 चीजों को बोलने का. एक बड़े संक्षेप में कर दूंगी और बड़ी विनम्रता से, सिर्फ मैं चेक कर रही हूँ. चेक्स एंड बैलेंसेस इन आवर डेमोक्रेसी सर. इन्हें कहते हैं परिवारवाद. मानती हूँ, मैं तो परिवार का प्रोडक्ट हूँ ही. मुझे बहुत अभिमान है जिसकी बेटी हूँ मैं प्रतिभा शरद पवार की बेटी हूँ और मुझे उसका बहुत अभिमान है. लेकिन एक छोटा सा मैं क्लैरिफिकेशन पूछ रही थी कि हमारा परिवार को मेरिट है ही नहीं, लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होती है उसमें जीके वासन जी, चिराग पासवान जी, कॉनरेड संगमा जी, प्रफुल्ल पटेल जी, दुष्यंत चौटाला जी, ये शायद परिवार नहीं, हम सिर्फ परिवार. वो सब मेरिट और हम सब परिवार. ये थोड़ा सा हम पे अन्याय हो रहा है. जस्ट पुटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट. एंड देन अनदर थिंग, सिलेक्टिव एमनीसिया होता है सर, और इनके एमएलए एमपी मंत्री सारे पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी वहां चल जाती है. हम करें तो प्रॉब्लम और नहीं. और अनदर थिंग व्हाट दे सेड, दिस नीड्स टू कम ऑन रिकॉर्ड सर, वेरी स्मॉल पॉइंट विच माय फ्रेंड दयानिधि मारन सेड. एनसीपी, इन्होंने भी कहा
कि इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हम सबको चोर कहती थी। ठीक है, उन्होंने कहा, बट ये भी कहते थे, मुझे याद है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके कहा था कि नेचुरली करप्ट पार्टी इस देश में कौन है, तो वो एनसीपी है। ये इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आके किया था। So can I get a clarification from this government? Now they are in government with them. Take their word back. Yes, sir. Nationalist Congress Party, it is not a naturally corrupt party. इसका जवाब इस सरकार ने देना चाहिए. And I want to clarify that it doesn't work. So when we are against you, we are bad. Okay, when we join you, we are good. ऐसा नहीं होता. Dr. S.T. Hassan ji. Democratic system, I stand here opposing this. They are intimidating people. This will not happen. This country has always fought against intimidacy. We will fight it and we will win this game. Thank you, sir. थैंक यू सर जी। सर हम तो ये समझते थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हम ब्यूरोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं। लेकिन एक मिनट क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? 57 एक सेकंड जी। 357 जी 357 कहता है कि आप यदि किसी मेंबर का नाम लेते हैं तो उसको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का अधिकार है। मीनाक्षी लेखी जी का उन्होंने नाम लिया है, आप कृपया उनको इजाजत नहीं, वो कह रही है क्या वो बोलने को नहीं, अधिकार तो है, लेकिन वो मैंने एक सेकंड मैंने उनसे पूछा, बैठिए निशिकांत जी बैठिए, मैंने उनसे पूछा आप कुछ कहेंगी, मैंने इशारे में पूछा। प्लीज सर बोलिए। सर मैंने जो बात कही थी, हाँ। मैंने कहा था चुनाव कैसे जीता, मतलब झूठे वायदे एक उसमें हो सकता है, रिगिंग वाली बात जो थी उसका मैंने पंचायत वेस्ट बंगाल का उदाहरण दिया था, वो उदाहरण दिया था मैंने। लेकिन इन्होंने मेरे मुंह में शब्द डालने का प्रयास किया, तो इसलिए ये क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए कि झूठे वायदे कि बिजली माफ और पानी हाफ, वो पानी माफ और बिजली हाफ, वो भी दिल्ली देख रही है, वो सब भी दिल्ली देख रही है और इसी कारण से वो जीते हैं। जी। अपने वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए। और जहां तक गिरगिट की कहानी में एक कैमियो रोल रह गया, वो है गिरगिट का। तो आज गिरगिट कह रहा था कि मैं चुल्लू भर पानी में डूबना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कुर्सी के लिए एक शहर के आधे राज्य के 1/4 मुख्यमंत्री क्लेम कर रहे हैं। ओके नाउ डॉक्टर एस.टी. हसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम तो ये समझते थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी सरकार ने इसको ब्यूरोक्रेटिक कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। सर मेरा अपने साथियों से ये सवाल है, क्या आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के फेवर में हैं या नहीं है? मंत्री जी मुझे बताने का कष्ट करें। हमारी देश की राजनीति के बहुत बड़े लीजेंड श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या ख्याल था इस बारे में आप सबको पता है, वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के फेवर में थे। आज आप क्यों इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? मैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आपने कम कर दिया, डिफ्यूज करना शुरू कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स पे हावी कर दिया। ब्यूरोक्रेट्स का होना तो ये चाहिए था जैसे कि मेयर नगर आयुक्त का सीआर लिखता है, उसी तरह से हम सारे सांसद और विधायक अपने यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का गोपनीय रिपोर्ट लिखनी चाहिए थी, ताकि इन पे कंट्रोल लें। हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर को भी एलजी का और राज्यपाल का सीआर लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घोटालों की बात कर रहे हैं, घोटाले कम से कम ये आपके मुंह से शोभा नहीं देते। आपने तो इन 9 सालों में घोटालों का कीर्तिमान स्थापित कर दिया। अडानी से लेकर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी तक हम कौन कौन से घोटाले गिनाए? आपने कौन कौन से घोटाले गिनाए? अडानी पे क्यों बेचैन हो रहे हैं भाई? सर हर घोटाले की जांच होनी चाहिए। हमारे पास एजेंसीज हैं, जो भी घोटाला कर रहा है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन सर इस तरह से अगर आप इसको पूर्ण राज्य देने का दर्जा नहीं देना चाहते हैं
तो फिर इलेक्शन क्यों कराते हैं? बंद करिए इलेक्शन, ये क्यों ड्रामा चल रहा है? और अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं तो पूरा अधिकार दिए चीफ मिनिस्टर को कि ठीक से वह गवर्नेंस कर सके, वरना ये अधिकारी किसी को कुछ करने नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Chairman. I'm rising on behalf of my party to strongly oppose the government of the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. Let me make it clear at the outset that this bill is no ordinary piece of legislation. It represents a grave chapter in the history of the Indian Republic, seeking to ratify an ordinance that in many ways is an assault on our democratic heritage and the spirit of federalism. During the introduction of the bill itself, sir, I had filed a motion strongly opposing its very introduction in this House at a time when a motion of no confidence is pending for discussion. In fact, the Bhagavad Gita of Parliamentary Practice and Procedure, Call and Shaktar, page 772, explicitly states, when the leave of the House to the moving of a motion of no confidence has been granted, no substantive motion on policy matters is to be brought before the House by the government till the motion of no confidence is disposed of. Sir, in 27 no confidence motions brought since independence to this House, no bills were debated and passed before this government did so with 2 bills in 2018. Therefore, such an improper introduction of a substantive policy change while a no-confidence motion is pending is against democratic morality, to use a word much favoured by the Treasury benches. Let me remind my colleagues in this House that it was almost 4 years ago exactly when this government unceremoniously passed a bill that sealed the fate of a state government practically overnight, in the rampant disregard for the basic constitutional relationship of the people of Jammu and Kashmir to the Republic of India. Without consulting them or their elected representatives, this government showcased the same attitude that we are seeing today. A breathtaking betrayal of our democratic political traditions, culture, and utter contempt for the people of the state and of the value of the political representation that these citizens of India give themselves through elections. 4 years later, we're back in the House with a government that is clearly bringing the same attitude to our national capital. We saw when the Home Minister spoke. Sir, I'm sorry, I'm not yielding. I'm not yielding. Point of order में yielding की बात नहीं होती. Point of order is point of order. Please, please. This is my right. Listen. No. It is yield or not. This is my right. Yes, ridiculous. Yes, it is right of the House. बोलिए 52-1. जी. 52-1. अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर के बारे में कहा सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का उसको रोज सुन रहा है और उसके बारे में इन्होंने बिना कुछ कहे हुए अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया. Sir, I am referring to something that happened in this House 4 years ago. Okay. It's a ridiculous point of order, sir. Now, the Home Minister, in introducing this bill, attempted to invoke Nehruji in his support. And I think that the expression that my friend Dayanidhi Maran was quoting in Tamil was that the devil can quote scripture for his own purposes. The truth is that times change, sir. Times change, and with that, facts change as well. There were no elected representatives for Delhi in an assembly in those days, sir. We were talking about a different Delhi and we were talking about a different India. Today, 75 years have happened since independence, 76. In any case, I have to say to my dear friends in the Treasury benches, you oppose everything Nehru said, you oppose everything Nehru stood for, so why not this one too? Oppose him saying that Delhi should be under the central government. That will be the end of the conversation. They also went on about alliance politics, but let me stress, Mr. Chairman, this is not about alliance politics. This is about a principle. And the principle is that the Democratic and Federal Republic of India finds a grave shadow cast upon it today, sir. The Union of States, so original and aspirational in its genesis, faces a crisis of the federal division of powers. We saw the Minister of State for External Affairs choosing to intervene on internal affairs. Fine, that's your party's prerogative. But the fact is that she asserted that India is not federal. She said it 3 times. Why then do we have a state list, a concurrent list, a union list? Because we are federal. I'm sorry, ma'am, I'm not yielding. I'm sorry. I'm responding to a debate, to a point made in a debate. I have every right to do so, sir. Why does the government and the Prime Minister speak of cooperative federalism if she is right and we are not federal? Obviously, the government wants to have
sing the virtues of cooperative federalism, but in stark contrast to that, we see the ruling party impinging upon the sovereign domain of the states, from vacillating on GST dues and Munrega payments to states, to bulldozing through laws and subjects from the state list. A blatant subversion of the constitutional separation of powers is taking place again today through this bill. The difference is that this time around, the Honorable Supreme Court was loud, clear, and unequivocal, and the government seems determined to ignore it. Let me set out before the House the three dangerous prongs of this amendment, sir. It removes services from the legislative competence of the Delhi Legislative Assembly. In other words, it amends the Constitution without being a Constituent Assembly, a constitutional amendment bill. Yes. Second, it establishes this National Capital Civil Services Authority, consisting, as everyone has pointed out, of the Chief Minister, Chief Secretary, Principal Home Secretary. Now, the authority in which the elected CM can be outvoted by the other two can even convene on the basis of quorum of 2. So even without the CM, the two officials can get together and decide anything they like, sir. They can make then recommendations to the Lieutenant Governor regarding transfers, postings, officials, disciplinary matters, and bureaucrats are going to henceforth exercise authority that voters have given to their elected public representatives. If BJP was in power in Delhi, sir, would they have accepted this? It seems the case of where you stand depends on where you sit. Now, third point, sir. The bill empowers the Lieutenant Governor to exercise his sole discretion on several matters, including those related to this civil services, the summoning, prorogation, and dissolution of the Delhi Legislative Assembly. So this implies that the elected Chief Minister may even be unable to convene a session needed for essential government business. The LG can overrule him. Even a unanimous decision of this authority can be overruled by the LG. He can define the powers and duties of the officers of the Delhi government, superseding the ministers. Now, sir, executive lawmaking through an ordinance, as the Supreme Court held in DC Wadhwa 1987, is only to meet an extraordinary situation and cannot be perverted to serve political ends, quote unquote, from the Supreme Court. But the government's arguments even today were all political, sir. And what is interesting is it has intervened on political grounds in a brazen manner. Most crucially, they have added this subject of the exemption of services to the existing exemptions in the Constitution: land, public order, and police, under Article 239 AA, which everyone has been citing. To do it without amending the Constitution, which requires a 2/3 majority and a different process, is an act of constitutional subterfuge, sir. Now, how ironic that when the Supreme Court has said that there is a complete breakdown of constitutional machinery in Manipur, you don't want to discuss it. But when you want to amend the constitutional machinery when it is functioning in working order in Delhi without admitting it. What kind of contradiction this is, sir? Now, is an ordinance or a bill even constitutionally permissible when the very framework of the Constitution's basic structure is being altered? Article 239 AA provides the Delhi Legislative Assembly with powers to make laws on subjects in the state list and the concurrent list, barring police, public order, and land. Agreed. Parliament, of course, their right, can legislate on subjects under the state list with respect to Delhi, but the bill specifies that the Delhi Legislative Assembly will not have the power to legislate on the subject of services, which actually comes under the state list. So by doing so, the bill effectively expands the subjects that the Delhi Assembly cannot legislate on, and therefore is changing the constitutional framework. Under Article 368 of the Constitution, a constitutional amendment has to be initiated for such an action. So I ask you, Mr. Chairman, sir, how can you admit this bill except under the rubric of a constitutional amendment bill? It just seems to me, sir, this is completely out of order in terms of the procedures of this House. Now, let me take you back to what the court has said in its judgment of May 2023. The Supreme Court has argued that democratic government rests on a triple chain of accountability. Civil servants are accountable to ministers, ministers are accountable to legislators, and legislators are accountable to the electorate. That is how we all function, sir. That's our democracy. If a democratically elected government is not provided with the power to control the officers posted within its own domain, then this key principle of the triple chain of collective responsibility becomes redundant, sir. By severing the first link of the triple chain of accountability, the bill is essentially contradicting the principles of parliamentary democracy in the very year that the Prime Minister has hailed us as the mother of all democracy. Can a mother treat her children this way, sir? Now,
I do want to say, sir, Article 239AA, which, even stepmothers would not do this, I assure you. Conferred a special status on the National Capital Territory, constitutionally entrenched a representative form of government, and incorporated a spirit of federalism so that the residents of the capital of India have a say in how they are governed, sir. It is the responsibility of the government of the NCTD to give expression to the will of the people of Delhi who elected them, sir. Now, the Supreme Court has said that Delhi has a sui generis status. They keep saying it's not a full state, but it has a special status. The court noted that the principles of federalism and democracy are interlinked, since the state's exercise of legislative power gives effect to people's aspirations, and that federalism, I'm quoting the Supreme Court, creates dual manifestations of public will in which the priorities of the two sets of governments are not just bound to be different, but are intended to be different, quote unquote. So what are they talking about, sir, on the Treasury benches? Now, the Supreme Court's May judgment reiterates the principle spelt out by its 2018 judgment that ministers bear responsibility before the legislature for every action undertaken by public officials in their respective department. The court has observed a paramount feature of the federal constitution is this distribution of powers in such a way that the ministers exercise their exclusive power over administration. Now, how can you then say that a minister is responsible for an official who in fact can supersede him in this, on the provisions of this bill? If you are a minister, Mr. Chairman, sir, and your official is taking a decision you don't approve of, how are you accountable? What happened to the core principle of parliamentary democracy, sir? And you cannot hold your officials accountable even for bureaucratic delays. They are larger than you, sir. As Supriya Sule said, the selected are overtaking the elected. Now, the Lieutenant Governor under Article 239AA has to act on the aid and advice of the Council of Ministers, except when exercising discretionary powers. Now, the Transaction of Business Rules of the Government of NCT Delhi, 1993, provides that certain matters must be submitted to the LG through the Chief Minister and Chief Secretary for his opinion prior to the issue of any order. And these are spelt out, sir. Peace and tranquility of Delhi, relations of the Delhi government with other state governments, and relations of the Delhi government with the Supreme Court, the High Court of Delhi, and summoning, proroguing, and dissolving of the Legislative Assembly. The bill expands those mentioned matters now to include the relations of the Delhi government with the central government. Additionally, it expands the powers of the Lieutenant Governor's opinion to have sole discretionary power on these matters. If there is any difference of opinion, even on matters beyond these three items, between the LG and the CM, the LG takes precedence. Now, this is the point that my respected colleague from the DMK was making, sir. Already in a time when there is a lot of controversy about the powers being exercised by governors in many states, we are now giving the Lieutenant Governor of Delhi an unprecedented degree of power over the elected representatives of the people who are supposed to implement the wishes of the public according even to the Supreme Court, sir. I'll conclude in 2 minutes, sir. The basic point is, you all know, Lieutenant Governors and Governors are supposed to act on the aid and advice of the Council of Ministers on matters within their executive competence. So you're contradicting the 2018 judgment of the Supreme Court, which stated that the decision-making power lies with the elected government. How can this pass the filter of this hallowed house, sir? What we have repeatedly seen under this government is a brazen effort to curtail the autonomy of states. The PM talks about cooperative federalism, but we are witnessing instead coercive federalism, sir, that seeks to centralize all power in the hands of the central government. And the problem is, it looks as if in the new India, some states will come first if they're ruled by the right party. Others must remain subservient to the political wishes of those in Delhi. I want to conclude, sir, with just two more thoughts. The first is, there are multiple aspects to this bill. There's been not to the bill specifically, but to what the bill represents. The cultural aspect of assaults on states' rights by the unjustified push towards imposing Hindi on the southern states. There's a law and enforcement angle through the weaponization of independent regulatory and investigative bodies like the ED, the CBI, the IT department. There's also definitely the use of legislation like the Disaster Management Act. We saw an obscure provision of which was used to ride roughshod over states' rights in imposing successive lockdowns during COVID without consulting states.
We've seen, sir, in the creation and misuse of the PM Cares Fund, which limited the flow of cash to the state-run chief minister's disaster relief funds. We've seen this with the acceleration of centrally sponsored schemes, which Now seeks conclude. to... Sir, I'm just illustrating the problem No, of states' rights and federalism, sir. So I do want to say, and finally the large number of cesses that are currently being levied by the central government, the proceeds of which are not being shared with states, sir. So I'm sorry to say, is this a new definition of na khaunga, na khane dunga? I'm very, very concerned, sir, that this legislation is putting uniformity and central control over the democratic interests of our country that the Prime Minister hails. And I do want to stress, fundamentally, this is a basic constitutional question. The highest court of the land has ruled in favor of both the spirit and the letter of the Constitution. Sir, we owe ourselves more respect. So Speaker साहब बोलते हैं कि इस सभा की गरिमा को respect करो, sir. We should definitely treat this House with more dignity than to let such a travesty of a bill pass this House. Thank you, sir, and Jai Hind. जी मसूदी साहब, चेयरमैन साहब बहुत शुक्रिया मुझे इस बिल पर बोलने की इजाज़त देने के लिए। जनाब मैं द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 की मुखारबत में खड़ा हूँ। जनाब दरअसल ये एक हमला है आइन पर और आइन के जो फंडामेंटल जो बुनियादी आइन की जो रूह है उस पर ये हमला है। तो जनाब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यहाँ ये कहा गया कि फेडरलिज्म इंडिया एक फेडरल स्टेट नहीं है और ये फेडरलिज्म इसका हिस्सा नहीं, इसके आइन का। जनाब केशवचंद्र भारती केस में स्पष्ट किया, साफ किया सुप्रीम कोर्ट ने कि फेडरलिज्म एक बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो इसको पामाल किए जाने की कोई इजाज़त नहीं है। तो जनाब दरअसल बात क्या है, मामला ये है कि लोकशाही और अफसरशाही के दरमियान एक मामला है। ये प्रयास किया जा रहा है कि अफसरशाही हो और लोकशाही नहीं हो। देखिए जनाब आइन के तहत जो जब हमने अपने खुद को एक आइन दिया, वी द पीपल, हम अपने आप को आइन दिया, तो हमने एक नज़रिया दिया कि ये कहीं मैप आउट किया और ये कहा कि कैसे चलेगा हमारा मुल्क, कैसे चलेगा। उसमें रियासतों को हकूक़ दिए गए और मरकज़ को हकूक़ दिए गए, लेकिन ये इजाज़त नहीं दी और उनका ये बाज़ाब्ता डिमार्केट किया गया कि उनके स्फीयर ऑफ एक्टिविटी क्या होगी, क्या अपना अपना स्फीयर होगा। लेकिन ये जो बिल है, इस बिल से कोशिश ये की जा रही है कि जो हुकूक हैं, जो भी इख्तियारात हैं दिल्ली के, वो खुद ले जाएं। जब यहाँ बार बार जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ और होना भी चाहिए था, क्योंकि ये मामूल बन गया इस सरकार का कि आक्रमण करने का आइन पर। और ये आक्रमण हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब एक स्टेट के 2 हिस्से किए गए और दफ़ा 370 और 35A को पामाल किया गया और आइन रोंद कर वो सारे फैसले किए गए। तो जनाब आज 356 का सहारा लेकर जो किसी भी जगह एक लेबॉर्ट्री बनाया गया जम्मू कश्मीर को, ये जो लेबॉर्ट्री बन गई और तजुर्बा किया गया वो किसी भी सूबे के साथ, किसी भी स्टेट के साथ किया जा सकता है। 356 का सहारा लेकर एक स्टेट के 2 हिस्से किए गए और सबस्टेंटिव चेंजेस किए गए 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की गई, जबकि 356 एक इमरजेंसी प्रोविजन है और वो रेस्टोरेटिव है, वो सिर्फ जमहूरियत बहाल करने का एक प्रयास है, एक मामला है। तो जनाब क्या नहीं, और आजकल क्या किया जा रहा है, 1.5 करोड़ लोगों को जनाब कोई असेंबली नहीं है, 9 साल से कोई हुकूमत नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। नहीं वहीं पर आओ ना, क्योंकि ये उसके साथ मुंसलिक है ना, तो कोई हुकूमत नहीं है और नहीं असेंबली का इंतखाब करने के लिए, मुंतखब करने के लिए इनके पास कोई हिम्मत है। तो जनाब एक नैरेटिव बनाया जा रहा है नॉर्मलसी का। जनाब आज जम्मू कश्मीर में छोटे जो ताजर हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, उनकी जायदादें जब्त कर रहा है। जब असली बिल पर आ रहा हूँ ना जनाब, कल यहाँ कहा गया कि 800 यूनिट बनाएंगे। आज ही मुझे कश्मीरी पंडित दोस्त ने फ़ोन किया कि नहीं, मुलाजिमों को उनके जो वहाँ जहाँ पर उनको रखा गया जम्मू कश्मीर में काजीगुंड वगैरह में नहीं, अब बिल पर मैं आऊँगा। तो जनाब ये भी उसी तसलसल में है जो वहाँ किया गया, ये भी उसी तसल्सल में, और यही बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है, क्योंकि कितना एक स्टेटमेंट है कि फेडरलिज्म है ही नहीं इंडिया में, ये फेडरल स्टेट है ही नहीं। अब जनाब इस बिल पर देखिए, सारा प्रयास है, सारा मकसद है केंद्रित करना जो भी पावर है, जो भी इख्तियार है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को, ताकि एक चुनी हुई सरकार जो है, उस चुनी हुई सरकार के जो हुकूक हैं, उसके जो इख्तियारात हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए और उनको बिल्कुल गैर मौसूल बनाया जाए। अब जनाब अगर थोड़ा एक देखेंगे जनाब, इसमें प्रयास है, इसमें यह कहा गया है कि एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी।
जिसमें केंद्रित होंगे, जिसमें मरकूज होंगे सारी पावर्स। अब जनाब उसके क्या इख्तियारात हैं? अगर वहाँ पर सर्वसम्मति भी हो, अभी कहा गया कि अगर ये होगा कि चीफ मिनिस्टर को वो रूल करेंगे 2 ब्यूरोक्रेट्स जो मरकज के बनाए हुए होंगे, तो ये कैसा सिस्टम है। लेकिन अगर वो सहमति भी हो, फिर भी आप देखिए, फिर भी जो रिकमेंडेशन अगर वो यूनानिमस भी हो, फिर भी इख्तियार है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दरकिनार करने का और वापस भेजने का। तो जनाब ये कैसा सिस्टम बनाया जाए, कैसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जबकि एक चुनी हुई सरकार जो है, चुनी हुई असेंबली है, उसके जो इख्तियारात है और उसका जो चुना हुआ वजीर आला है उसको बिल्कुल डाउनग्रेड करके और उसके सारे इख्तियारात को बिल्कुल गैर मौसर करके एक इख्तियारात मरकूज किए जा रहे हैं जो नॉमी है। जैसे आज जम्मू कश्मीर के सिलसिले में जनाब सदर जमहूरियत ने खुद की कॉन्फ्रेंस खुद ली, क्योंकि वहाँ के गवर्नर जो थे उनके बनाए हुए थे, वो कैसे कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस हुई जो आइन का तकाजा था, वो दरकिनार किया गया। जनाब ये डेंजरस, ये बहुत ही खतरनाक तरफ जो दिशा में मुल्क जा रहा है जी, क्या किया जा रहा है, कैसे शोबों को। और जम्मू कश्मीर के मामले में जनाब बाकी जगह जनाब 3 लिस्ट थे, कंकरेंट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो खुदमुख्तारी थी उसमें जनाब स्टेट लिस्ट था ही नहीं, क्योंकि जो हमने दिया था केंद्र को सिर्फ वही केंद्र के पास। बार-बार उधर चले जाते हैं। यहाँ और कहाँ जाऊँ, जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करता हूँ, जम्मू कश्मीर की बगैर और कहाँ जाऊँ। तो जनाब बस कंक्लूड करूँगा। तो जनाब बात यह है कि जनाब ये भी उसी गैर, अब देखिए एक और बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की। जनाब अगर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सामने मामला है तो प्रॉपर्टी ये है, मॉरलिटी ये है, एथिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल ये है, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जाए, वो क्या कहेगा फिर किया जाए। हो नहीं रहा जिस तरह यहाँ अमेंडमेंट बिल हो रही है। अरे कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ये है कि हम टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले का इंतजार करें, उनको अपना फैसला देने। जैसे बिल की अमेंडमेंट लाई गई वो भी और उसको ऑपरेशनल किया गया। भाई ये जो मॉरलिटी है, जो एथिक्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, उसका पास प्लीज। जब मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल को मुखालफत करता हूँ और ये मैं इस्दा करता हूँ इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल आइन के मुखालिफ है जी। श्री अब्दुल समद सामदानी जी जी प्लीज। Thank you, sir. Sir, I oppose this bill. Sir, it is a very critical legislation that is definitely going to upset and disrupt the delicate balance between the center and the states. Sir, it is against the very basic constitutional dictum that India shall be a union of states. I am sorry to say that it is a move for greater centralization against part 11th of the Constitution, which governs the relation between the center and the state. Sir, this is not well intended, it is ill motivated, and sir, the motivation behind this legislation is very ulterior. It is equal to nullifying the recent constitutional bench verdict, which says, sir, I quote, the subjects of services covered under 41 bracket state list will fall under executive and legislative domains of the Delhi government, unquote. Sir, that is why the legislative quality and the competence of this bill is under question. Sir, we all know that it is against cooperative federalism. Nobody can justify. Whatever points may be brought by the learned members on the other side, you can't conceal the negative aspects of this bill, which goes against the very spirit of cooperative federalism. Sir, it is highly condemnable that potentially divisive issues are brought to focus. It is not for the good of the nation. Maybe it is done by the government in the run-up to the next year's election. But sir, it will not be for the good of the nation. Sir, another worst example for this kind of negative attitude is pitchforking and triggering the dormant and contentious debates around the Uniform Civil Code. That is also done in this juncture. Sir, India has remained uniquely unified
despite infinite multiplicities of the country in various spheres of its life. So, sir, we have to protect the values and ethos of cooperative federalism. It is by protecting the diversity alone we will be able to protect the values of federalism. Sir, the diversity cannot be subsumed in an artificial uniformity. That is what we want from the government also. Sir, I can't understand why the government is rushing for and pushing for this kind of negative legislation, which are against the very norms of social, religious, linguistic, ethnic, and political diversity of the country. It is going to surely affect badly our structures of fiscal federalism, linguistic federalism, cultural federalism, and also political federalism. As well as I add